हाँ उमा जी। सर, वो जी सर, जी वेंकटेश सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप सर पे क्यों बांधा है? ऐसे ही धूप में से टेम्परेचर आया था ना, 43, थोड़ा 44। अच्छा अच्छा, ओके कोई हाँ। हाँ वो धूप में से मैं आया था तो ऐसे ही बैठ गया था। हाँ हाँ अरे ये ऐसा ही लग रहा है जैसे वो गोली लगी थी ना, वो हाँ अतीक मोहम्मद का, तो ऐसा ही उड़ हाँ, गया था उसका, जैसा आपने उड़ाया। जी सर। एनीवे, बताइए। सर अभी हम लोग जो है सो अति यहाँ तो सब कुछ लग गया है, प्रिंटर उंटर सब लग गया, इंस्टॉल हो गया है। लेकिन वहाँ पे हम लोग को रजिस्ट्रार जो है सो पेपर मांगा था, सारा बायोलॉज मेमोरेंडम और सर्टिफिकेट और वो सब जो हमको वहाँ छत्तीसगढ़ वाला जो भी था, दिल्ली वाला सब पेपर सब अभी कर लिए हैं। 26 तारीख को वो जो पहले पुराने जज थे ना, वो ट्रांसफर हो गए हैं, वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। तो उनके जगह पे अभी नए जो आए हैं वो 26 को ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद जो है सो हम लोग का पेपर ऊपर सब वहाँ जमा हो गया है। और कल सर वो बायोलॉजी दे दिए थे, तो मंडे को वो भी जमा हो जाएगा। उसके बाद जो है सो वहाँ सर उनके ज्वाइनिंग करने के बाद ही आगे बढ़ेगा। यही तो है सर। मानसी, Mansi, today Yes, sir. Mansi, already almost 20 people have raised a question. Why Yes, not sir. to ask them to log in by 4:30? Because the people who want to ask question, hardly I find only 15 people, out of which 7 are we are only this thing. So why not to delegate some of your volunteers to make them join immediately? Okay, And sir. just and whomsoever question you are going to raise, वो पहला देख लो कि वो है, because why not to tell one of your volunteers, I'm just teaching you how the management how it works. So have one assistant for you who will remind that next question, because whomsoever. So next 2 3 questions, see that a person is there. If not, you just jump the question. Otherwise, you Okay, will be sir. wasting time inviting them and all. Okay. I hope Yes. you got my point. Okay. Yes, I will get it. Immediately tell We'll your tell them to volunteer. join on. Yeah, immediately tell your volunteer to keep them ready one after the other, and Yes. see that all of them log in here. Yes, Yes, sir. Mr. Anjani Kumar has also logged in. Okay. Yes, and 3 questioners, I am seeing them. Mr. Rajan Patel is here. Dilaran Lal on behalf of that lady too. Then Mantri, that lady, name is that Mukund Raj is also, he has also a question 4. Then the list is with Mansi. You can identify and see the callers. Yes, sir, I'm doing that right now. Yeah, it is. Praveen, hi, Praveen. It is already 5 o'clock. Many of our people have not yet joined. No, Praveen, I think that Yes, now sir. after way only 17, 18 people are joined. I think that now sometimes we have to remind them on the day of the webinar, one day before, like a separate banner if it goes. Don't forget, tomorrow evening, keep yourself free from 5 to 8. So, because what happened today, like we don't know, Friday, Saturday, every day is busy day. This thing. So, on the day Today of the only webinar, problem is we have 2 festivals, Akshay Tritiya and Eid. yeah, I think that also we must think about it. Yeah, Akshay Tritiya and Anyway, anyway, okay, I then think that one short 1 minute animated video is under preparation. Maybe by next week we will be able to make it public, and in that also we will make this thing one Thursday on Friday. We will repeat it. anyway. अच्छा, now Mansi, who are all the people? आज का सवाल का who are all? Shall we start, sir? There are 2 Yeah. people there. Huh? How 2 many? people, Mukund and Ashwarya.
No, Aishwarya's topic are we take Artika? We are not taking, no? No, sir. No, because that we have to talk about it. Okay. Anyway, we Yeah. should start, I think, because time is precious for our Yeah. guest. Yeah. Not guest, I am saying Anjani Kumarji. So, Because he has to be very, very particular about time. no. One thing is, I think that now we must do something to see that maximum number of people take advantage, they get benefited, and people should log in by maximum by 4 to 5. No, I will talk personally to all. I think that no, we must have certain people to follow up, see that all the questionnaires are present. If the questionnaire is not present, we should not take up. Yeah. Okay. Let us start, sir. अंजनी कुमार जी नमस्कार। सत्येंद्र कुमार जी माइक बंद कीजिए। नमस्कार अंजनी कुमार जी, थैंक यू सो मच, वेलकम। नमस्कार टू ऑल। एंड आज का वेबिनार will be moderated by Mansi Saraya. You can see it on the screen. And for your information, Mansi is the person who prepared the minutes of the last webinar. Great job. Thank you, sir. She is a second year law student, and she made the minutes. And so today she will be moderating today's webinar. And unfortunately, being two festivals on the same day, Akshaya Tritiya and Eid, so the response has been slightly muted. We will ensure that in future the response is better, or we will avoid the public holidays. Sir, people are coming and joining. We should move ahead with that. Yeah, okay. People who are in need, they will come. Yeah. People who are not in need, they may not come. And our idea should be that if we are finished with the question and answer session, then we can also wind up. We need not to wait for 130 hours or etc. You people are doing a very great philanthropic job. So needy people have to come if they are coming fair. Otherwise, we will finish. We will also finish. Not an issue. I fully agree with you, sir. Mansi, Yes. the floor is yours. Please go ahead. Yes, sir. I'll start with a small introduction, then we can start with the questions. Yeah. I'm Mansi Saraya, one of the student coordinators. Deem it a great honor to welcome each and every one of you to the virtual legal advice consultation center session, which is being jointly organized by National Federation of Societies for Fast Justice and Public Concern of Governance Trust, with an aim to provide free legal aid advice to citizens in need. This goal wouldn't have been possible without the dedication and significant contribution of our esteemed speaker for today, Shri Anjani Kumar Singh sir, who is an advocate practicing at Honorable High Court of Bombay as well as Supreme Court of India. We are extremely grateful to have you here today, sir. I humbly request you to carry the session forward. So I will request Shri Rajan Patel sir to ask the question. Rajan Patel sir, आप हैं यहाँ पे? You are asking Rajan me? Patel. Yeah, no, Mr. Rajan Patel. Okay. Rajan Patel. Rajan Patel is here. Yeah. Yeah. So sir, you can proceed with the question. Rajan Patel जी, Rajan Patel sir. आप वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज कम। राजन पटेल। और हिंदी में बात कीजिएगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। आप वीडियो ऑन राजन पटेल जी और आपका सवाल पूछिए। पटेल जी, Praveen, why not you call him up here? By the time he comes, why not you move on with the second question? By the time Rajan Patel will be on the line, maybe he has a computer problem. Yeah. Mr. Dilharan Shastri जी है यहाँ पे? Dilharan Shastri. दूसरा सवाल। हाँ, आप आइए। ओके, आपका सवाल पूछिए। हाँ। आप सबको प्रणाम सर। हाँ। प्रणाम जी, मैं नाम मेरा जी, बताएं दिलहरन शास्त्री जी, बोलिए। सर, मैं एक विडो महिला जो एसीसीएल एम्प्लॉई है, पति के जगह पर काम करती है और अभी वो थोड़ा उनके घर में एक शादी है, थोड़ा सा दूर है, तो मेरे को प्रतिनिधि के रूप में वो बोल रही है। उनको एक नोटिस दिया गया है एसीसीएल कुसमुंडा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड कुसमुंडा की तरफ से। उनका घर
खदान एरिया से 14-15 मीटर पर है। खदान एरिया ही उनके घर के किनारे आई है। उनका घर तो बरसों से वहीं पर है और उनको बोल रहे हैं कि आप अपना घर का नापी करवाइए, पैसा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हमको खदान आगे बढ़ाना है। ऐसा एक प्रॉब्लम उनके साथ खड़ा हो गया है। मतलब उनका ये ऑफिस में नहीं है सर, ये ACCL कुसमुंडा ऑफिस खदान एरिया है और ACCL कोरबा में वो कार्यरत है। तो अच्छा। वहाँ के अधिकारी, वहाँ के GM, वहाँ के स्टाफ अधिकारी के द्वारा उनको नोटिस दिया गया है। अब उनके पास उनके घर में कोई पुरुष वर्ग नहीं है, 5 बिटिया हैं। रात को भी उनके घर आके उनको दबाव बनाते हैं लोग और उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं सर ये लोग। एक्चुअली में उनको 12 साल पुराना मुआवजा को लेने के लिए बोल रहे हैं। 2009-10 में अधिग्रहण हुआ है और उसी समय का मुआवजा आज ले लीजिए और घर को खाली कर दीजिए। ऐसा ही उनके साथ प्रॉब्लम खड़ा हो। ऐसी हमारे गांव में बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा है। हम क्या करें सर? हम आपसे देखिए इसी संबंध में देखिए इस संदर्भ में पहले मैं आपके ये जो श्रीमती गीता बाई है ना, जी गीता बाई महंत है। गीता बाई का ही केस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है? जी हाँ। तो जो श्रीमती गीता बाई है ये पाली ग्राम की है, पाली तहसील की है, तहसील पाली है, ठीक है ना? अब तहसील पाली तहसील है सर। अच्छा, तहसील मेरे को हाईकोर्ट के एक साइट पे एक पिटीशन मुझे मिला, तहसील पाली है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट है। एनीवेज इसमें हमको नहीं जाना है जी, कोरबा। हाँ, तहसील हो डिस्ट्रिक्ट हो, इससे आपके अधिकार पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मुद्दे पे आता हूँ। जी ठीक है ना? जी हाँ। मेरी समझ से एक बात जो आपने कही कि वो 2010 का कंपनसेशन लेने को बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक 2017 की पिटीशन है जो कि डिसाइड हुई थी इन्हीं सब इश्यूज पे। 64 लोग गए थे। उन 64 लोगों में खाली प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में क्या आई थी कि 2007 का उनका एक्विजिशन था और वो चाह रहे थे कि 2013 का एक कानून है जिसको न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, उसके हिसाब से कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट पे मैंने काम किया है कुछ किसानों को लेके और उनके कंपनसेशन को लेके, तो मैं इतना जरूर आपको बोल सकता हूं कि वो 2010 का कंपनसेशन, जबकि न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं बना था, न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में बना था, ठीक है ना? तो आपको 2010 के हिसाब से तो आपको कंपनसेशन नहीं दे सकते, उनको 2013 वाले कानून से ही देना पड़ेगा। और 2013 कानून मैं एकदम सिंपल, मतलब साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम वकील की तरह नहीं, एकदम आम आदमी की तरह आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 2013 का कानून बहुत सिंपल तरीके से कंपनसेशन को डिसाइड करने का एक क्राइटेरिया उसमें दिया हुआ है, एक तरीका दिया हुआ है, ठीक है ना? वो तरीका ही उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब भी लैंड ली जाएगी उस समय के मार्केट वैल्यू के हिसाब से ली जाएगी, उस समय का बाजार मूल्य जो होगा लैंड का उसके हिसाब से ही लिया जाए। तो एक बात, अगर आज भी वो गीता देवी अपनी उस जगह के पोजीशन में है जी, तो खाली आप ये सबूत के रूप में इंश्योर कीजिए, क्योंकि इस तरह की चीजों में मैंने, जैसे किसानों के मैटर में मैंने देखा है, बेसिकली जो अथॉरिटीज होती है ना वो बड़ी एग्रेसिवली काम करती हैं। वो आती हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, रात को भी धमकी देने आ जाते हैं लोग, तो अथॉरिटीज थोड़ा सा हाई हैंडेड तरीके से काम करते हैं ये लोग, ये सबको पता है, कोर्ट को भी पता है। तो ये थोड़ा जबरदस्ती करते हैं, ये जबरदस्ती करते हैं, आपको प्रेशर में लाते हैं, आपको बोलते हैं कि आप निकल जाओ। तो आपका काम ये है कि जब आप हो तब का सबूत होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हम लोग के पास सबूत दिखाने के लिए कोर्ट में नहीं रहता है। अब सबूत जब मांगने चाहिए, जैसे कुछ किसानों के मैटर में मैंने देखा, अब उनके पास ये सबूत ही नहीं था कि उनका घर कब टूटा या कब उनको घर से निकाला, तो उसका बेनिफिट वो लोग ले लेते हैं। तो आप गीता देवी जी को बोलिए कि कम से कम लेटेस्ट फोटोग्राफ, कम से कम ऐसे फोटोग्राफ या ऐसी चीजें, ऐसा वीडियो जिसमें कि डेट, तारीख, टाइम ये सब आता हो मोबाइल में, वो सब
कि आज तक आप रहे हैं, इन सब चीजों को जो भी तरीके से कुछ सबूत इकट्ठा कर सके कि वो आज तक जी रह सर। रही है। और नोटिस कब मिला उनको, नोटिस कब मिला है? नोटिस आपने तो लिखा? अभी 9 तारीख को मिला है सर, इसी महीने का 9 तारीख को। ये 9 तो तारीख को मिला जी, 9 तारीख 9 अप्रैल को मिला, ठीक है ना, 9 अप्रैल। जी हाँ, हाँ, जी तब हाँ। मेरी समझ से उनको बोलिए थोड़ा सा अलर्ट रहे, थोड़ा एविडेंस कलेक्ट कर ले कि भाई उस घर में रह रहे हैं। आपके एक सवाल का जवाब क्लियर कट है कि आपको 2010 के हिसाब से, यानी कि 2013 की न्यू लैंड एक्विजिशन के हिसाब से ही उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इतना तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि इस तरह का केस मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है ना। और अभी जो आप बोल रहे हैं कि वो आपको धमकी दे रहे हैं निकलने का, तो एक छत्तीसगढ़ मॉडल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ 2007 है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो उसके बाद उन लोगों ने एक मॉडल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ 2007 बनाया था। मुझे उसी छत्तीसगढ़ में ये इसी तरह के लैंड एक्विजिशन के मैटर में जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केसेस गए थे, उसको मैंने पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि क्या होता है कई बार फैक्ट्स आप लोग बताते हैं उसमें डिफरेंस होता है, तो मैंने खुद रिसर्च किया। जी जी जी। मैंने देखा है कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ 2007 के हिसाब से आपको उनको रिहेबिलिटेट भी करना पड़ेगा। इवन उस मॉडल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में ये भी है कि लोकल को एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ता है या उनको सैलरी भी देना पड़ता है। तो आप जो अभी वर्तमान की घटना है, मतलब जो अभी 9 तारीख को नोटिस मिली है, कृपया इस केस को पुराने केस से मत जोड़ दीजिएगा। ऐसे लोग जो नया, जिनका कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन मतलब केस फाइल करने का अधिकार, ठीक है ना, मतलब अभी तो केस फाइल करने का अधिकार उसी को अच्छे तरीके से मिलता है जो कि जिनको अभी ये सब घटनाक्रम जिनके साथ हो रहा है, जिनके साथ ये घटना घट रही है, ठीक है ना। जी जी जी। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों को आपके जो लोकल कोई वकील हैं उनसे समझिए। एक चीज और मैंने देखा है, अभी ये मिस्टर राजन पटेल की भी प्रॉब्लम वही की प्रॉब्लम है। अब उसमें मैं उनका एक क्वेश्चन देखा कि लोग पिटीशन फाइल करके विड्रॉ कर लेते हैं। अब ये सब सारी चीजें होती हैं, उसका मुझे पर्पस नहीं समझ में आता। तो आप जो भी वकील रखिए, अगर आपके जो भी वकील साहब आप रखना चाहते हैं, तो उनको भी लेके आइए इस मीटिंग में। हम लोग तो हर हफ्ते मिलते हैं, एक बार उनको समझने दीजिए, उनको समझाइए, उनको गाइड करेंगे कि उनको किस तरह का पिटीशन या किस तरह का रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारी लिमिटेशन है। हम जब भी ऑनलाइन आपसे बात करते हैं, तो जब भी हम ऑनलाइन आपको एडवाइस देंगे कोई चीज, तो हमारे पास पहली बात तो आपका न कोई नोटिस की कॉपी है, न कोई पेपर है। ये हमने अपने तरीके से समझा है, चीजों को समझने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो हमारी डिफिकल्टी ये रहती कि आप जो बोले हैं और आप जो समझ रहे हैं, आपकी समझ को समझ के फिर उसके हिसाब से आपको एडवाइस देना है। और आपके मैटर में आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर आप पोजीशन में हैं तो गीताबाई को न्याय मिलेगा। इसलिए आप किसी अपने वकील को भी अगर जोड़ेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं अच्छे से और गाइड कर पाऊंगा। लेकिन आपके साथ 2010 का कंपनसेशन वो नहीं, 2013 के ही हिसाब से उनको मार्केट वैल्यू से कंपनसेशन देना पड़ेगा। और कोई सवाल हो तो जी सर। ये एक्चुअली में एम्प्लॉई है, ये कुछ मुंडा कोरबा एसीसीएल ऑफिस में है। तो वहां से इनको नोटिस दिलाया गया है कि अगर जब तक आप मकान को नापी नहीं करवाओगे, आपका बाड़ी आप खाली नहीं करोगे, तब तक आपको ड्यूटी नहीं आना है, ऐसा करके नोटिस दिया है। यहाँ से नहीं दिया है इनको। ऐसा नोटिस मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा लिख के देंगे कि आप घर खाली करो, नहीं तो आपको काम नहीं करने देंगे। वो परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉई है, क्या है वो? चिट्ठी में वैसे ही तो लिखा है सर। आप चिट्ठी की कॉपी करिए पटेल साहब, आप चिट्ठी की कॉपी। मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कई चीजें ना डाइजेस्ट। अगर इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो आपके घर को नौकरी से निकालने के लिए एक तरह से ये तो ब्लैकमेल करना हो गया, आपको कोर्स करना हो गया। वो आपको कोर्स कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप मकान खाली करो, इसको छोड़ के निकलो, नहीं तो हम तुम्हें नौकरी पे नहीं लेंगे। ये तो और भी, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, ठीक है ना। मैं जॉइन सर, मुझे नहीं लगता है कुछ करेंगे। जी सर प्लीज बोलिए। इसमें 2-3 बातें जो है, जो अभी आई। नंबर 1, जो नोटिस मिली है उसकी स्कैन कॉपी आपको हम भेज रहे हैं जी। नंबर 1, शास्त्री जी ध्यान से सुनिएगा।
स्कैन कॉपी जी, जी। करके आप हमको या व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ये जी, नोटिस गीता बाई जी। की। दूसरी बात है, इन्होंने सूचना के अधिकार के अंदर जो इंफॉर्मेशन मांगी थी फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये माइनिंग को लेकर जब बातचीत हुई थी तो उसके अंदर सूचना के अधिकार में जब कागज मांगे गए, इन्होंने कुछ दूसरे ही कागज दिए। फिर उनके बाद में इन्होंने कहा कि हमने जो मांगा है वो तो दिया नहीं, आपने कुछ दूसरा ही दे दिया है। जस्ट एवॉइड टैक्टिक्स था। उसके बाद उन्होंने दूसरे पेपर्स दिए जो मेरे को परसों रोज इन लोग पहुंचाए। इट्स अ वॉल्यूमिनस। उसके अंदर हमने पढ़ा है परसों रोज कि ऑलरेडी द लैंड हैज बीन एक्वायर्ड इन द ईयर 2010। अब इन लोग अभी लड़ रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, मगर एससीसीएल ऑन पेपर दे हैव एक्वायर्ड द लैंड। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। Under land acquisition, sir, under land acquisition act, there are multiple stages. Hello, everybody can, you all are listening? You all can hear me? Hello? Yes, sir, we can hear you. See, there are stages in land acquisition act. तो इनका नोटिफिकेशन तो बहुत पहले हो जाता है। नोटिफिकेशन के बाद एक डीम्ड नोशनल पोजीशन भी इनका हो जाता है। फिर इनका फिजिकल पोजीशन होता है। फिर इनका कंपनसेशन डिपॉजिट होता है। फिर कंपनसेशन डिपॉजिट करके कंपनसेशन के इनहैंसमेंट के लिए ये कभी फिर लड़ाई लड़े और उसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते हैं। ये लैंड एक्विजिशन का प्रोसीजर यही है, मोर और लेस सब जगह यही है। अब इनके केस में अगर ये बोलते हैं कि इनका लैंड एक्विजिशन एज पर द ओल्ड एक्ट हो गया है, क्योंकि न्यू लैंड एक्विजिशन 2013 का है। अगर ये बोलते हैं कि एज पर द लैंड एक्विजिशन ओल्ड एक्ट के हिसाब से हुआ है, फिर भी न्यू लैंड एक्विजिशन ने ओल्ड लैंड एक्विजिशन को रिपील कर दिया है, तो मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन है एज अ लॉयर, कि व्हेन द पोजीशन, फिजिकल पोजीशन इज लाइकली टू बी टेकन, उसी समय ही का मार्केट वैल्यू उनको देना पड़ेगा। अब इन सब चीजों के लिए ये मेरा एडवाइस है, लेकिन इन सब चीजों को प्रैक्टिकली सामने लाने के लिए, प्रैक्टिकल पोजीशन पे लाने के लिए, everything is to be litigated. Everything is to be litigated. So for that purposes, proper pleading and proper understanding of law and proper fact has to be pleaded in the case. Otherwise, the problem what happens, if you are unable to plead properly in the case also, if you are unable to plead the facts properly in the case also, you lose the case. Yes, तो मैं यहाँ पर स्टिल डिसएग्री करता हूँ। उनका लैंड एक्विजिशन हुआ होगा 2010 में, ऐसे होते हैं केस कि लैंड का एक्विजिशन नहीं, वो नोटिफिकेशन होता है कि फॉर दिस पब्लिक पर्पस गवर्नमेंट इज नोटिफाइंग दीज लैंड्स आर टू बी एक्वायर्ड। उसका खाली ये होता है, नोबडी कैन क्रिएट थर्ड पार्टी राइट, कोई सेल नहीं कर सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। लेकिन द पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ द लैंड। तो जब इस बीच में एक्ट चेंज हो गया, 2013 का एक्ट आया, तो इट विल रिपील, बट the money is to be paid as per the market value. Supreme Court का judgment है, कई judgment है इसमें, even after 2013 act. So I believe see, one more thing I would like to tell here. दिलहरन सारथी जी, आपको भी बोल रहा हूँ, गीता जी के तरफ आप हैं, और मैं सबको बोल रहा हूँ जो भी यहाँ प्रेजेंट है, ये सारी जो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, ये बातें हैं, आपको एक एडवाइस है, एक गाइडेंस है आपके लिए। लेकिन फिजिकली आपको वहां पर एक वकील को रखना पड़ेगा, और जो सारी बात को समझेंगे और फिर ये ऐसा लिटिगेशन करेंगे, तभी होगा। अब कई केसेस में क्या होता है, जैसे न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट में है, चाहे कई और केसेस में है, कहीं आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है। अब उसमें एनएच एक्ट में आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है, एनएच में अगर आप, तो इस तरह से इनके ये न्यू लैंड एक्विजिशन के हिसाब से इनका और कोई प्रोपोजिशन है क्या, इनका डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या ये अडॉप्ट करते हैं, ये सब इनके कई केसेस में अपने को पता चलेंगे, तो दैट लोकल पर्सन विल बी इन अ पोजीशन टू टेल अस, अकॉर्डिंगली वी कैन एडवाइस। बट मोर और लेस in larger or in a practical way, the fact is that they will get the compensation as per the market value, number one. Second, they will be rehabilitated as per the Chhattisgarh model rehabilitation policy of 2007. And because it is her house, I am reading the contention, asked to get her residence and land surveyed. तो उनका घर भी सर्वे करने के लिए बोला जा रहा है, उनका लैंड भी, तो रिहेबिलिटेशन तो मिलना चाहिए। एंड नाउ आई एम इन्फॉर्म्ड दैट शी इज ऑलरेडी वर्किंग इन कोरबा ऑफिस ऑफ द SCCL। तो फिर ये तो कोर्सिव हो गया। तो मेरी समझ से इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली वहां पर करना पड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं
दिलहरन शास्त्री जी, केवल गीता देवी जी ही हैं कि और कोई भी है? नहीं, ऐसे कम से कम 250-300 लोग हैं सर गांव में। एकदम आइडेंटिकल। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे 250 लोगों को नोटिस इसी अप्रैल में मिली है, आप ये बोल रहे हैं? जी जी जी, अभी ही दे रहा है देखिए, सर, उसमें वो नोटिस जी। मैं फिर बहुत रिपीट कर लोग रहा हूँ, आप ये बोल रहे जी हैं कि ऐसे 250 लोग या आसपास जो भी हैं या 100 भी हैं, इन लोगों को नोटिस अभी ये अप्रैल में ही दी जा रही है कि अपना घर का सर्वे करो और खाली करो, नहीं तो इनमें जी से जी कुछ लोग नौकरी पे होंगे, कुछ लोग नौकरी पे नहीं होंगे, यही फर्क हो सकता है, राइट? नौकरी पर तो नहीं है, नौकरी पर नहीं है सर, नौकरी पर सारे गीता लोग नौकरी देवी पे है। नहीं होंगे, सारे लोग नौकरी पे हाँ, नहीं होंगे, लेकिन ये नौकरी पे है तो लेकिन इनको एक कोर्सिव अभी स्टेप लिया जा रहा है कि हाँ बोलिए बोलिए। अभी वो सर अभी वो इनके कंपनी में कोयले खदान में भी ओवरबर्डन का काम करने के लिए आउटसोर्सिंग में एक कंपनी आई है, नीलकंठ सकार करके, गुजरात की कंपनी है मेरे ख्याल से। तो वहां पर जो ड्राइवर प्राइवेट कंपनी में ड्राइवरी कर रहे हैं, उनको भी ये नोटिस दिया गया है, उनको निकाल दिया गया था काम से, तो उनको गांव के उनको ही लड़कों को। यानी कि उनका भी हाँ लैंड और मकान सर्वे करने के लिए कहा होगा और उन्होंने जी नहीं जी किया तो जी उनको नौकरी से निकाल दिया, यही बोल रहे जी हैं? हाँ जी हाँ। फिर उसके अब बाद देखिए, में फिर मालूम है वो आपकी बात से मुझे क्या नहीं अंदाजा कुमार जी, लग रहा आपका है? आवाज बंद हो गया। मुझे लग रहा है लैंड नोट, अंदाजा लग रहा है, दिस इज Yeah. ऑल assumption आई एम गेटिंग। लैंड आपकी नोटिफाइड हो गई, नोटिफाइड होने जी के बाद उन लोगों ने आप लोग को रिहेबिलिटेट करना शुरू कर दिया एज पर द पॉलिसी, छत्तीसगढ़ मॉडल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2007। जो पॉलिसी ये बोलती है कि आपको उनको सर्विस जॉब भी देना पड़ेगा, आप लोग को उसने शायद जॉब भी दे दिया, और उनको अभी लैंड को एक्सपेंशन करना था, अभी जरूरत अब पड़ी है। तो ये सारी चीजें जब तक फैक्ट देखेंगे नहीं, मैं सब अंदाज पे बोल रहा हूँ, अपने अपने assumption पे। जी जी ठीक है सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, ये हाँ लोग 2009-10 में वो जो जितना जो अधिग्रहण का जो प्रक्रिया है, मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, वो प्रक्रिया 2009-10 तक कंप्लीट कर लिए, धारा 4, धारा 7, धारा 9, धारा 11, हाँ धारा हाँ 13 ऐसा करके। और 2017 में 2000 मतलब 2009-10 से 2017 में एक एसडीएम को लेकर के आए लोग, कभी नहीं आए उस बीच में, और एसडीएम साहब को लेके आए। उसी बीच में वो 5 स्टेटमेंट पत्रक होता है, जो मुआवजा पत्रक बोलते हैं धारा 13 के बाद में, उसको बंटवाया ये उसी समय 2017 में। कुछ लोगों को ये, जैसे गांव का, पूरे गांव का 300 एकड़ जमीन जा रहा है इनके खदान में, कोयला खदान में, तो 300 एकड़ में ये 150 लोगों को अपने खदान में नौकरी, स्थायी नौकरी देने के लिए तैयार हो गए ये। बिल्कुल पर बिल्कुल, वो व्यक्ति लिखा को पॉलिसी में है। जी, तो पर व्यक्ति को 2 एकड़ टोटल जमीन 300 एकड़ है सर, 150 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो 2 एकड़ में ही रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 2 एकड़ के किसान नहीं है गांव में। तो ये अपना लोकल पॉलिसी एक बना लिए कि चलो हमको तो 300 एकड़ जमीन मिल रहा है, तो क्यों ना 150 लोगों को रोजगार दे दें। और वहीं से इनका बात बिगड़ गया, मात्र 10 लोग हैं 2 एकड़ वाले, और 2 एकड़ वाले 10 लोग हैं, तो 150 लोगों को रोजगार देना है, तो घटते क्रम वो अपना एक पॉलिसी बना के कट ऑफ पॉइंट करके एक पॉलिसी बनाए। तो 56 डिसमिल आज के तारीख में जिनका जमीन है, वहीं से जोड़ते हैं तो 150 लोग होते हैं। तो आपको अभी अब किसानों का बोलिए बोलिए बोलिए, जी, सुन रहा हूँ मैं, तो बोलिए। 150 लोगों को रोजगार। तो गांव वालों का जो कहना है, जिनका 55 डिसमिल से नीचे का जो जमीन है, ये लोग 56 डिसमिल से ऊपर वालों को रोजगार देंगे बोले, और 55 डिसमिल से नीचे वालों को पैसा ले लो बोले। लेकिन वो पैसा वो 2009-10 का ही पैसा है, उसमें स्पष्ट लिखा है, इनके नोटिस में भी निकला है, लिखा है कि 29/10/2010 ऐसा करके 29/10 में कोल बेरिंग एक्ट के तहत आपका जमीन को केंद्र शासन ने अधिग्रहण कर लिया है, ऐसा नोटिस में अभी भी ये लोग ऐड किए हैं, उसको लिखे हैं। और हमारे आपके हमें बोलिए, जी बोलते बोलते रहिए, आप बोल लीजिए तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ, तो गांव के जो लोग हैं 55 डिसमिल से नीचे के जो कृषक हैं, अभी सब अपने घर में ही हैं, अपने ही जमीन में हैं। कोई भी किसी को इनके पास जैसे वो बसाहट दिया जाता है, पुनर्वास अब रुक व्यवस्था जाइए, दिया जाता है, रुकिए वो रुकिए जमीन रुकिए, भी अब नहीं आप है सर इनके पास। रुकिए, आपकी बातें अब रिपीट हो रही थी। देखिए सुनिए, आपने ढेर सारी बातें एक साथ मुझे बता दी, जी जी ठीक है ना? आपकी ये ढेर सारी बातों का कोई इन सब बातों का कभी भी कोई अंत नहीं होता है। हम समझ रहे हैं आप लोग परेशानी में हैं, इसलिए आप सारी बातें बता रहे हैं।
लेकिन सही मायने में मैंने आपकी जो समस्या समझी है, आपकी दो ही समस्या है। मैं गीता बाई का एक रिप्रेजेंटेटिव केस मान के, जैसा आपने बता दिया ऐसे 250-300 लोग हैं, तो अगर आइडेंटिकल केस है तो गीता बाई का रिप्रेजेंटेटिव केस के हिसाब से मेरी समझ से दो ही इशू है आपका। एक, आपका घर लिया जा रहा है, आप सारे लोग आज भी पोजीशन में हैं, एक बात। दूसरा, आप सबका घर से निकालने के लिए सर्वे करके बोला जा रहा है कि निकल जाओ, हम लोग घर लेना है और जमीन हमें लेना है। और तीसरा, वो बोल रहे हैं कि हम आपको कंपनसेशन एज पर द ओल्ड लैंड एक्विजिशन देंगे, इसीलिए वो 2010 को बार बार पकड़ रहे हैं। अब मालूम है, यही इन्हीं तीन मुद्दों में आपका पूरा केस है। बाकी सारी बातें, इतनी नौकरी, इतना एकड़ लैंड लिए तो उसके हिसाब से 150 को नौकरी दिए, ये नहीं दिए, ये सारी पॉलिसी उनकी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं जो नौकरी दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है वो सरकार, राज्य सरकार की पॉलिसी है। राज्य सरकार की पॉलिसी जो बनी है वो वहां के लोगों के लिए बनी है, तो उसको वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो मुद्दा आपके तीन है। इन तीन मुद्दा को कि आपको घर मिलना चाहिए, आपको कंपनसेशन न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट से मिलना चाहिए, और आपको नौकरी की जो पॉलिसी है, अगर नौकरी है नौकरी के हिसाब से, तो आपको वो मिलना चाहिए। इन्हीं तीन चीज की लड़ाई है। और ये लड़ाई बात से समझ के लग रहा है मुझे, इस लड़ाई में आपकी जो ये कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये चाहेगी कि आपको कंपनसेशन 2010 में लैंड एक्विजिशन ये वो के हिसाब से दे, और बोले कि हमने उस समय दिया और 2013 के रेफरेंस से न दे। तो ये तो कोर्ट ही फैसला कर सकती है। ये तो ना कंपनी बोलेगी कि हम आपको एक्स अमाउंट देंगे या ये अमाउंट देंगे, इतना रुपया देंगे, और आप बोलेंगे कि हमको इतना रुपया चाहिए। ये जब ये डिस्प्यूट, रिहेबिलिटेशन वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिहेबिलिटेशन जो है वो बेसिक राइट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको घर में रहना तो वो उनको देना पड़ेगा। उसके लिए अगर वो कोई प्रोविजन नहीं कर रहे हैं तो दे आर कमिटिंग बिगेस्ट मिस्टेक। उस इशू पे तो आप सीधे हाई कोर्ट में जाके केवल इस मुद्दे पे कि कंपनसेशन, हमारा इशू बाद में डिसाइड करिए कि हमें कौन से कंपनसेशन किस लॉ में मिलना चाहिए, ओल्ड लैंड एक्विजिशन एक्ट में मिलना चाहिए कि न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट में। लेकिन रिहेबिलिटेशन के इशू पे, जो कि मकान सर्वे करके दीजिए और नहीं तो आपको तोड़ के निकल जाइए, आज जाइए छोड़ के, उस पर तो हाईकोर्ट का तुरंत आपका संज्ञान लेगी, और संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट तुरंत आप लोग को या तो स्टे करेगी या रिहेबिलिटेशन बोलेगी इंप्लीमेंट करने को कि इनको रहने का घर दीजिए आसपास, तभी ये आप पोजीशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सब आदमी का घर लिया जा रहा है अगर तो, क्योंकि यहाँ आपने लिखा है कि गीता देवी के मामले में कि रेसिडेंस और लैंड सर्वे करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर रेसिडेंस है तब तो इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात है, मैं आपको ऑनलाइन आपकी बात अपने तरीके से समझ के मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। मेरी पूरी एडवाइस गलत हो सकती है अगर आपकी बात में और हमारी समझ में कोई फर्क पड़ा, क्योंकि हम सारी चीज डिस्कस करके आपको एडवाइस दे रहे हैं। इसलिए मुझे आपके एक लोकल वकील और ये सारी चीजें और समझने के लिए चाहिए, जिससे कि मैं और ठीक से एडवाइस दे दूं। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा अभी हो रहा है तो देर मत कीजिए, अर्जेंटली हाईकोर्ट मूव करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि और कोई सवाल है अभी। सर, मैं इंटरव्यू? हाँ प्लीज। सर, इन गांव वाले की मीटिंग हुई है, पर्टिकुलरली आपके लास्ट सजेशन के बाद, और उनको ऑफर भी किया गया आपके आने के यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे करके और बात के। तो गांव वालों ने खुद ही कहा कि हम लोग सामूहिक रूप से आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह जो भी टिकट परचेज करना, जो करना, वो सब हम लोग कर देंगे। तो सारथी जी कुछ बोलेंगे उसमें? सर नहीं, सर रुकिए, इतना अभी इतनी जल्दी बात में आना ठीक नहीं। पहले तो मुझे मत करिए ऐसा, एक इनका लोकल वकील दीजिए, नहीं तो मैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मैंने 4-5 मैटर चलाए हैं, और वहां पर एक बड़ा अच्छा मुझे ईमानदार बंदा मिला है, एडवोकेट आकाश कुंडू, एंड ही इज माय एडवोकेट इन 4-5 मैटर्स। आकाश कुंडू को जानते हैं क्या? रायपुर का लड़का है। मेरे को नंबर दे दीजिए सर, हम लोग बाकी हम लोग मैनेज कर लेंगे आकाश कुंडू को। लेकिन मैं आकाश कुंडू को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चर्चा कर रहा हूँ। मैं हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में मैंने 6-7 मैटर चलाए हैं, तो उसमें मैंने कई एडवोकेट से मेरा इंटरेक्शन हुआ, जिसमें ये लड़का मुझे ईमानदार दिखता है, फेयर दिखता है और मेहनती भी है। ही इज अ यंग बॉय, मे बी हैविंग अ प्रैक्टिस ऑफ 5 to 7 years, लेकिन आई एम नॉट रिकमेंडिंग हिम। लिसन टू मी, अलाउ मी टू कंप्लीट। आप अपना वक्त रखेंगे तो चूंकि मेरा कंफर्ट लेवल, आप मेरे से ज्यादा कंफर्ट लेवल आपका जरूरी है,
इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना कोई वकील ऐसा रखिए जो कि मेहनती हो, जो पढ़े, उसको जो बताया जाए वो करे, बेसिक ड्राफ्टिंग बना के दे, बेसिक रीडिंग जो मैं गाइड कर रहा हूँ वो सब निकाले, फिर वो तैयारी करे, फिर वो जैसा पिटीशन एक बार अप्रूव कर दे वो फाइल करे, और ये सारी चीजें जल्दी करे। अब ये अप्रैल में है तो इट शुड बी डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल और फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मई इसको करे, तभी इन लोग का अगर ये सारे लोग की नोटिस अभी मिली है तो इट इज अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम, इन लोगों को कोई ना कोई रिलीफ हाईकोर्ट से मिलेगा। क्योंकि मैं एक चीज और देख रहा हूं, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैं देख रहा हूं काफी पिटीशन कोरबा डिस्ट्रिक्ट के, बुडबुड विलेज के, पाली तहसील के काफी मैटर्स जो है मैं देख रहा हूं किसी न किसी डिले इन द पिटीशन, इन सब पे सारे पिटीशन डिसमिस हुए। और एक पिटीशन मुझे दिखा कि डिसमिस हुआ तो केवल हाईकोर्ट ने ये कहा कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिहेबिलिटेशन द पिटीशन इज अलाउड, कंपनसेशन और डिले, और वो भी यही था कि हमें प्रीवियस कंपनसेशन के हिसाब से नहीं, हमें नए कंपनसेशन में दीजिए, तो हाईकोर्ट ने डिसमिस किया। प्रॉब्लम क्या होती है सारथी जी, और मैं सबको बोल रहा हूं जो भी यहाँ पे हैं, वंस एडवर्स जजमेंट्स आर ऑलरेडी देयर बाय द ऑर्डर ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ऑन आइडेंटिकल इश्यूज, रिहेबिलिटेशन पे फेवरेबल जजमेंट है, रिहेबिलिटेशन पे तो हाईकोर्ट ने बोला कि पिटीशन इज पार्टली अलाउड और रिहेबिलिटेशन इनको किया जाए, कोरबा डिस्ट्रिक्ट का ही मैटर है तो, और ये कोलफील्ड का ही मैटर है, तो उसमें हाईकोर्ट ने जब कई ऑर्डर जब इस तरह के इशू आके पास हो जाते हैं ना, तो एज अ मैटर ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन हमें ये भी देखना होता है कि इनका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो प्रीवियस कॉज ऑफ एक्शन से बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए, प्रीवियस लीगल इशू या फैक्चुअल इशू से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोस्टली वही ऑर्डर मिल जाता है। तो हमको फैक्चुअली बहुत हार्ड वर्क और बहुत होमवर्क करना पड़ता है जस्ट टू सी कि कहीं ऐसा तो नहीं वी आर फाइलिंग आइडेंटिकल पिटीशन, तो एक लाइन बोलेगी कोलफील्ड के वकील बोलेगा कोर्ट में कि माय लॉर्ड दिस इज वेरी आइडेंटिकल पिटीशन एंड दीज पीपल आर ऑन द आइडेंटिकल फुटिंग एंड देयरफॉर दैट पिटीशन वाज आल्सो रिजेक्टेड, इट शुड आल्सो बी रिजेक्टेड, इतना ही होता है। तो इनके मैटर में ये एक नहीं, मैं देख रहा हूं कई मैटर इनके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऐसे जा चुके हैं और उस पर कई जजमेंट्स भी आ चुके हैं। तो हिज केस इज वेरी डिफिकल्ट, बट ओनली वन पॉजिटिव पॉइंट, इनका एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि इनसे मैंने 3 बार पूछा कि ये सारी नोटिस अभी मिली है, तो बोल रहे हैं अप्रैल में मिली है, तो यानी कि इनका फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन, और सारे लोग अपने लैंड और घर में रह रहे हैं, यानी कि इनका फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है, इन लोग को रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है। तो इसीलिए हमें ग्राउंड लेवल पर आपके लॉयर चाहिए जो कि आपसे जिनका कंफर्ट लेवल हो, जो आपके साथ मिलकर काम करें। मैं यहाँ से गाइड कर दूंगा, देन विल सी कि आई कैन कम एंड आई कैन आर्ग्यू द मैटर, दैट इज नॉट इशू। मेरी बात समझ रहे हैं सर? प्रवीण साहब आप बोलिए। नहीं, आई एग्री विथ यू सर, वी विल वर्क आउट एंड फाइंड आउट एक्चुअली जो केसेस रिजेक्ट हुए हैं, और एक अच्छे वकील को जो लोकल इनको सपोर्ट करे उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके वी विल स्टार्ट वर्किंग। जो इनका वकील होना चाहिए, लेट मी टेल यू उनका कंफर्ट लेवल बहुत जरूरी है। 100-150 लोगों को जो कि गांव के लोग हैं उनके बड़े हाई होप्स होते हैं, इनकी बड़ी आशाएं होती हैं भाई, इनके आशाओं पे खरा उतरना बहुत चैलेंजिंग होता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ सर। यस सर, बोलिए। मैं 2 मिनट 1 मिनट और बात करना चाह रहा था सर। हमारे साथ कुछ भिन्नता है सर। खदान जो है, कोयले की खदान हमारे घर के 13-14 मीटर पर आ गई है। अच्छा। वो जमीन हमारा नहीं है जहाँ पर वो कोयला निकाल रहा है, दूसरे की जमीन है, दूसरे गांव की जमीन है, लेकिन वो किनारे इतने आ गया कि 14 मीटर पर उनका 400-500 होल में एक ब्लास्ट होता है, उसका जो ब्लास्टिंग से पत्थर गिरता है वो हमारे छत में आती है, और छत में आने से अभी पिछले 2 महीना 5-2 को सारे घर में पत्थर गिरा था, 12-15 घर में, तो सारे महिलाएं अपने घर से बाहर निकल गए, अपने ही जमीन में खड़े होकर के जब देखे हैं तो उनका 2 दिन तक वो खदान का ब्लास्टिंग जो है बंद हो गया। उसके लिए हमारे ऊपर उन्होंने केस किया है कि ये हमारे खदान के किनारे मत रखें। एक बात बताऊं जी, उन्होंने तो केस कर दिया जी, हाँ, उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जी, उनके लीगल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, बड़ी कंपनी है, उन्होंने तो फटाक से केस कर दिया। अभी यही मैं बोलने जा रहा था आपको, आपके ये उन्होंने केस कर दिया, आप भी पुलिस FIR नहीं लेगी आपका, ठीक है? आप बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा कि पुलिस को कंप्लेन कीजिए, तो आप मुझे ये बोलेंगे कि पुलिस FIR नहीं लेगी, मुझे मालूम है आप ये बोलेंगे। तो कमिश्नर हैं, SSP हैं, आप लेटर लिख के जाके दे के उस पर ठप्पा लगा के रख लीजिए,
ये सब सबूत आपको करना पड़ेगा। मुकदमा ऐसे ही लड़ा जाता है। है सर, ये पुलिस FIR है और SP साहब को, कलेक्टर साहब को, सबका है मेरे पास। हम लोग पूरे तो गांव सबको के नहीं लोग तो गए थे। SP साहब क्या तो ईमेल कर डालिए, उतने ईमेल अगर लिख सकते हैं तो सबका ईमेल लिखवा दीजिए, जिसका ईमेल हो ईमेल से लिखवा दीजिए, जिसको, और जितने लोग अफेक्टेड है सबका या तो साथ में ग्राम प्रधान की तरफ से या लोकल लीडर की तरफ से सबका नाम लिख के साइन करा के कहीं कंप्लेंट डाल दीजिए। लेकिन ये सारे सबूत आपको बनाने पड़ेंगे कि आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है, ठीक है ना। और फिर यही सारी चीज आपके हाईकोर्ट में काम आएगी, ठीक है ना। सर, इसमें SP ने ऑलरेडी कहा है, इनको एश्योर भी किया है कि आई एम विथ यू, और 2010 की जो कंपेंसेशन की बात करते हैं दैट इज यूजलेस, आपको 2013 के हिसाब से देना होगा, और आई एम विथ यू। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ SP इज आल्सो दैट। वेरी गुड। और 3-4 चिट्ठी गई है, एक चिट्ठी फेडरेशन की तरफ से हम लोग ने भी भेजी है जिसमें ये सब बातें कही गई है, और इसकी सबकी रिसिप्टेड कॉपीज भी है, एंड वी विल सेंड बाय ईमेल टू यू सर, स्कैन कॉपी। वेरी गुड। यस सारथी जी। जी सारथी जी से बात हो गई, मुझे लगता है। सारथी जी, मुझे नहीं लगता कि आपका और कोई सवाल है, आपको काम करना है। नहीं, मैं सारथी जी को राजन पटेल के लिए बात करना चाहता था। हमारा राजन के तरफ अंजनी सर, हम लोग गांव के तरफ से, आप एक बार हमारे यहाँ आ जाते, आपका आने जाने का खर्च हम लोग दे देते, खाली देख लेते आप अपने नजरों से। सुनिए आपके टाइम में मैं आप लोग के लिए करूंगा, लेकिन पहले आप अपना एक लोकल टीम बनाइए, क्योंकि आपकी आशाएं, देखिए आप लोग ना बहुत मेहनत करके एक अपने तरीके से आने और नहीं आने की बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। हमारा अभी हाईकोर्ट में वैकेशन भी शुरू है, मुद्दा यहाँ ये हमारे आने से कुछ नहीं होगा। आप एक लोकल टीम बनाइए और इसको एग्रेसिवली लड़िए। मैं आपको गाइड करने को तैयार हूँ, और आना होगा तो आ भी जाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आने की। लेकिन आप अपनी टीम नहीं बनाएंगे ना, तो आपकी आशाएं पूरी नहीं होंगी, तो आपको दुख होगा। इसलिए आप पहले अपनी एक टीम बनाइए। पहले आप अपने नीचे वकील खड़ा करिए 2-3, ठीक है ना। अपने टीम एक बनाइए वकीलों की, जिनसे मैं उनसे काम करा सकूं, फोन पे, जूम पे। मैं तो आने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जिसके लिए आप लगा मेरे है हमारा। भरोसे बैठिए मत, मेरे भरोसे बैठिए मत। आप लोग के, आपके वहां ब्लास्टिंग हो रही है और आप चाहेंगे कि कोई आदमी दिल्ली से और मुंबई से आपके पास आए। आपको अपना पहले घर बचाइए। वो था कि एक बार जी मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप पहले अपना टीम बनाइए, अपना घर बचाइए, अपना पिटीशन दाखिल कीजिए, पुलिस को कंप्लेन करिए, सबूत लीजिए, आप इकट्ठा कीजिए, ठीक है ना। जी 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 सारथी जी, राजन पटेल से बात कीजिए, वो उनको कनेक्ट होने में तकलीफ हो रही है। कर दे रहे हैं। हाँ, देख लीजिए। तब तक मानसी एंड पूजा, यू कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेज टिल राजन पटेल सॉल्व्स द टेक्निकल डिफिकल्टीज। तो माइक काम नहीं कर रहा है शायद, पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि ना मैं सुन पा रहा हूँ, ना मेरी आवाज जा रही है, ना मेरे को कोई आवाज आ रही है। प्रवीण पटेल, आपका पास Yes, sir. आपको आइडिया है तो आप ही बता दीजिए। सो सिंस ही हैज लॉग्ड इन, लेट हिम लिसन। नहीं, मैं बता देता हूँ प्रवीण पटेल जी, आप उनको बता दीजिएगा। आपका ये नोट्स आने का बहुत फायदा है। These notes are very important. I give about an hour time, then I can understand what I have to answer. See, आपने जो राजन पटेल का नोट दिया है ना सर, ये विलेज छरपारा कोरबा डिस्ट्रिक्ट का, छत्तीसगढ़ का, इसमें इनके मैटर में इन्होंने बताया कि इनकी इंटायर लैंड है 50.84 एकर्स, जो राजन पटेल के ग्रैंडफादर के नाम से, ठीक है ना। इसको NTPC ने पावर प्लांट सेटअप करने के लिए एक्विजिशन किया था, और एक्विजिशन बट टिल डेट नो कंपनसेशन हैज बीन पेड टू द फैमिली। आज तक कोई कंपनसेशन नहीं पे किया है। अब ये बात जो है ना, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हमें अपने जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उन पर हमें भरोसा करना ही पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट आता है इसको एग्रीव होता है। तो मैं यहाँ भी मान रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति सवाल लेके आ रहा है, हम उसको मान रहे हैं कि बट आई एम अनेबल टू डाइजेस्ट कि कोई भी लैंड एक्विजिशन जो कि नोटिफाइड हुई है 78-79 में, वो उसका कंपनसेशन आज तक नहीं मिला है। आई एम सरप्राइज, नंबर 1। एक बात, चलिए फिर भी मैं इनकी बात सही मान लेता हूँ। खाली इनकी एक बात जो बहुत अच्छी है, जिसके बेसिस पे पिटीशन डाला जा सकता है, इनका आइटम पॉइंट नंबर 4.7 है। अगर आपने जो नोट भेजा है पटेल साहब, तो काइंडली सी द पॉइंट नंबर 4.7 यू हैव देयर, यू हैव सर पटेल साहब। प्रवीण, प्लीज अनम्यूट यार।
Praveen? No, I will have to go back to my Word file. It will take time. No need. I am reading. Yes, sir. I am reading. इनके सारे प्रॉब्लम लिखते हुए उन्होंने एक बात कही है कि एक्शन टेकन बाय राजन पटेल सो फार, ठीक है, तो व्हाटएवर ही डिड, ही रिटन लॉट्स ऑफ लेटर, एनटीपीसी एंड मेनी अदर. 4.7 में एक चीज लिखा है, इन रिस्पांस टू पीएमओ लेटर, इन्होंने पीएमओ को भी लिखा था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी has stated that they will return 27.32, means out of 50.84 acres, they have said that 27.32 acres of land, but nothing has been done so far. तो ये जो है ना, ये लेटर जो है, ये लेटर 2020 के बाद का है, क्योंकि इन्होंने पीएमओ को लेटर लिखा है 2 दिसंबर 2020 को, लेकिन एनटीपीसी का लेटर का डेट नहीं लिखा हुआ है. तो अगर 12/20 में इन्होंने पीएमओ को लेटर लिखा और पीएमओ के इंस्ट्रक्शन पे एनटीपीसी ने अगर ऑफर किया है कि 27.32 एकर्स ऑफ लैंड वो रिटर्न कर देंगे, तो हियर इज द पॉइंट, यहां से वी कैन इंटर इनटू द एंटायर मैटर एंड वी कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड वी कैन से दैट एज पर द एडमिटेड फैक्ट they should immediately carve it out as per the as interim relief this land, and then finally we can demand an other verification also for other land, or where the land has been acquired and is under use, we can claim as per the current market value if no compensation has been paid. अब इसमें इन्होंने एक और बड़ा वाइटल इशू दूसरा लिखा है 4.7 के बाद 4.8, that has actually troubled me to give any advice. क्या लिखता है वो देखिए, राजन पटेल हैज फाइल्ड अ रिट पिटीशन, यानी कि वो पीएमओ के लेटर मिलने के बाद, पीएमओ के इंस्ट्रक्शन पे एनटीपीसी के लेटर मिलने के बाद का ये पिटीशन इन्होंने लिखा है, पिटीशन फाइल किया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में. राजन पटेल had filed a writ petition at the Chhattisgarh High Court in the year 2022, but was withdrawn for the reason that only dates were available and opposing party were going on taking dates as such. He withdrew the petition with the hope that matter will be amicably resolved with NTPC authorities, which अब ये जो लिखा है ना, I do not concede and do not consider that it's a fair play. Some foul play is there. Somebody has motivated them to withdraw the petition. Petition withdraw हो गया तो पूरा नया petition आप फाइल नहीं कर सकते, res judicata हो जाएगा. और फिर मुझे ये ऑर्डर और ये petition की कॉपी चाहिए to understand कि whether they are in a position to get any relief or not. Yes, sir. तुम मुझे बोलिए कि वो जो, हाँ प्लीज टेल मी. इसके एग्जैक्टली सेम कंसर्न मैंने भी रेज की थी और कहा मुझे पिटीशन की कॉपी चाहिए और व्हाट इज द रीजन फॉर विड्रॉल. तो रीजन में ही कहा कि ऑपोजिट पार्टी वाज टेकिंग टाइम, ऑलवेज तारीख लेते जाते थे, हमारे खर्चे हो जाते थे और हमको लगा कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए हमने विड्रॉ किया. मतलब बेसिकली ही इज एडवोकेट कुशवाहा. All petitions are pending. That is not a cogent reason. All petitions are pending. मैंने उसको वही चीज समझाया कि ये पिटीशन पेंडिंग है, तारीख हो रही है, दैट इज नॉट द रीजन फॉर विड्रॉल. तुमको ये किसने सिखाया? तो उसने अपने वकील के ऊपर कहा कि उन्होंने कहा कि आप ठीक है विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर लो. तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात छुपाया है लगता है. इसके लिए उनका पिटीशन की कॉपी और ऑर्डर देखिए, देन अकॉर्डिंगली वी कैन एडवाइस. वी कैन मूव ऑन. आई हैव आल्सो ऑलरेडी कॉल्ड फॉर. यस, मैंने मंगाया है पिटीशन की कॉपी और विड्रॉल की बात. यस, ठीक है सर. या यस, थैंक यू सर. Thank you. Yeah, over to you, Pooja and Mansi. Mansi, yeah. Yes. Thank you so much, sir, for answering these questions. Now we'll begin with the questions that are asked by student volunteers. So I'll request Vasvi Divedi to switch on her mic and camera and ask the question. Vasvi, are you there? Vasvi? Vasvi ji. I don't think so. She's there in a meeting or she can't unmute. She's Ashwarya, there. you can push. Yeah, but she's not. You can go to the next one. Call the Yes, next one. Ashwarya. Ashwarya, please ask your question. Hello, am I audible? Yes, you are. Okay. So my question is, as free legal aid is provided. Hello. Tell me, I Yes, can sir. listen. Hello.
Yeah, Yes, yes, you're audible. You are audible. Okay. Okay. As free legal aid is provided to women, children, and senior citizens, do you think this could have an adverse effect on the advocacy profession? What measures can be taken to balance the provision for free legal aid and the livelihoods of practicing advocates? No, I think, however, it is a subjective question, but still I'll answer it. See, it is not a problem, and it could never be a problem. Because see, India is highly populated country. Now we are the #1 in the world. You must be aware of this data. And still our entire judicial system is in the process of reform because of our new Chief Justice, and he's taking lots of pain to reform the entire judicial process. And still the number of real litigation lawyer is very limited. People are taking LLB degree, but very limited lawyers and acclaimed lawyers or even knowledgeable lawyers are there still. You go and see the data of the Bar Council of India or state bar councils, or even go to Bar Association, you will find very limited practicing lawyer who are really, acclaimed or who are really doing justice to their profession. Don't go with the LLB degree, go with their practice. I am only LLB, but see my period of practice and exposure to the society and then work, then only I am gaining experience. So your question that free legal aid is provided to women, children, and senior citizens, do think that they could have an adverse effect on the advocacy profession? I am telling you, it is like that. The kind of the exposure what you are getting to the problem, because you have lots of people, and still our system is under reform, but still our system is a bottleneck. It is unable to perform as per the economic and social development of the society in India. So lots of scopes are there for lawyers. The condition is, instead of being apprehensive and blaming too that these legal aid will compromise the future of the advocates, or they may not be getting matters for attending, etc. On the contrary, all these matters, once you appear, once you get the experience by getting the free legal aid, you become acclaimed, you become experienced. So having such apprehension is, I believe, it is unfair. So therefore, in my opinion, everybody, whenever they are getting the chance, if you will become perfect by giving free legal advice to people, your acumen will increase, strengthen by giving free legal advice to people, then automatically you will be hired by the people who are really seeking your advice, etc. So it's a ladder, it's a step, it's a further step. Never feel apprehensive that your practice is going to be compromised, or as far as your point that some regulation should be made for the free legal aid and the legal practicing advocate balance the provision of the free legal aid. There are already regulations of free legal aid. NALSA is there. They are engaged into. But can I tell you, we are still facing lots of practical problems. So therefore, scopes are a lot for the young lawyers and balancing. The point is, who is giving time, they will get the benefit of that. People who are not giving time to profession and then crying foul and lots of other problems, because of this we are unable to do anything. So that is their personal problem, in my opinion. So please never feel apprehensive. Don't get scared of anything. You are a young lawyer. Don't get scared. If you will work hard, you will get lots of clients, lots of opportunity you will get. Thank you, sir. Thank you so much. You are a young student. That's why I answered you, because it is pertaining to it. It sounded some apprehension in your mind. That's why I answered you. You needed more motivation. Then all the best. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Sujinda, you can proceed with the question. Sujinda, are you in the meeting? See, he has some connectivity issues right now. Could you proceed with asking these questions? Pooja, yeah. Who is this? Pooja Nayak, correct? Yes, sir. Yeah, tell me.
Yeah, so sir, actually Vasvi has a question, but she's not in a position to unmute. So I will ask on So her behalf and she's whose listening to question? Whose answer. question you are asking? Whose question? Vasvi Dwivedi. Please tell me. Yeah. Yes, sir. So a lady located in a place in Mumbai is seeking for divorce because of domestic violence. However, she cannot bear the cost of taking a legal action. So how can she proceed further with it, sir? Let her go to family court, which is situated in Bandra. There is a free legal aid authority in Maharashtra. Maharashtra Free Legal Aid Authority is there. Even there must be, in my opinion, there should be. Or if it is not there, then it is in High Court also she can approach. But there should be Free Legal Aid Center or authority office, or she can go and demand, or even if she can go and tell the concerned superintendent of the court that I wanted free legal aid advocate. So she will get the free legal advocate free of cost, and who will guide her to file the divorce petition, etc. and everything. When court can also appoint. So that she has to go locally. There are free legal aid center in all the courts. She has to simply go and tell her problem and tell that I am poor. Probably they will seek certain declaration that what the job you are doing, why you are claiming that you are poor. Probably some form they will ask to fill up, and they will provide a free legal aid advocate. So that is not a big problem. Every court is there now. Every court is having that arrangement. And if it is not there, let her, because I don't know whether it is there. I believe that every court is has, but if she is failing, then let her come to High Court. In High Court, it is there. They will make arrangement for that. They are doing it. Okay, got it. Thank you so much on behalf. Thank you. Okay, now we'll proceed with Ashraya's question. Ashraya, can you unmute? Yes. Aishwarya Mantri. Yeah. Yeah, tell me, Aishwarya. So, my question is, like, can Adivation order, like the Adivation order is passed in the Mantralaya, can it be challenged in High Court? Any order passed by any forum can be appealed or can be challenged in jurisdiction. If any order is passed by any executive and there is no established procedure to go in appeal, and where it is written that no appeal lie against this order, all those matters can be challenged before the High Court. Please listen carefully. Again, I am repeating. Any order passed by any forum, any executive, where if specifically law provides that no further appeal lie in such matter and this order would be final, in such case, the Article 226 would be there and matter can be filed in the High Court. Where some executive actions are there, where you feel that some illegality is there, that also you can challenge in High Court. So forget about a particular Adivasi order passed in Mantralaya. Even that can also be challenged in High Court. Or if that provision of law says that no, the order is passed by so-and-so and there is appeal to so-and-so, then you cannot bypass the appeal procedure and you can directly go to High Court. Again, I am simplifying. Where there is an alternate remedy to go in appeal, in that matter, you cannot come to High Court in general. Even with some specific provision, even having alternate remedy, also lots of judgments are there. You can file a writ petition in High Court, but that is in exceptional circumstances. But your answer is there. Yes, order passed in Adivasi matter also can be filed if there is no alternate remedy provided in the act or in the rule. Then you can come to High Court and you can challenge it. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Now I request Ashraya Bed to ask a question. Ashraya Bed. Yes, I'm here. Proceed with the question. So, I wanted to ask the reservation which is being given under Article 15 on the basis of caste. Is there any probability that this can be eradicated, and instead of that, the basis on which these particular reservation is being provided can be on the basis of financial stability and on the basis of income? ये नया टेलीफोन नंबर का सिम कार्ड है long back.
Indira Sahni versus Union of India judgment is there. Supreme Court is there. Constitution is there. Already reservation is there on the caste basis. So it's a subjective question. Can it be eradicated? It can be. But now, as per the present position, it is already interpreted by the Honorable Supreme Court of India. Yes, when Honorable Supreme Court of India has also carved out a creamy layer. That creamy layer, people on the basis of people who are financially sound, they cannot be given reservation. So creamy layer has been carved out. Even lots of state, even poor rehabilitation, poor people, financial, all these things are in process. But as far as the cap on the reservation is concerned, an interpretation or eradication of something, it is the subject matter of the Constitution, as well as which is interpreted by the Honorable Supreme Court. So I believe I have nothing to do into this, and I don't want to give opinion on this. I follow the Honorable Supreme Court and the Constitution of India. And I believe you should also follow this till the time Supreme Court does not give another judgment or Constitution is not being amended. Okay, sir. Thank you. Welcome. Thank you, sir. I'll request Anita to proceed with the question. Good evening, sir. Am I audible? Yeah. Yes. What's a good name? What's a good name? Her name is Anita. Anita? Anita number 7. Machado. Yeah, please tell me, Anita. Tell me. Yes, sir. Tell me, Anita. Hello? Anita, please tell your Yes, question. yes. Please. Yeah, my question is, I mean, I'm a faculty, but we come under social welfare department, meaning we are coming under that department. So there are many concerns related to protection of services or even getting your arrears in terms of salary, and so many other issues are there, which is always delayed. So in case we need to address these grievances, going through the court procedures might become a little bit difficult for us, considering the schedule that we are into. So would it be advocated to directly present our grievances under the administrative tribunal? Do we have a tribunal like this in existence? Your organization is a state organization or central organization? It's actually a college, sir. So it is coming, we are paid under UGC, but our payment, the social work colleges come under the purview of social welfare department. So you are talking about the grievance of the teacher, correct? Yes, sir. Yes, sir. So it is because your question is framed, I'm sorry to say, bit vague. So that's why I wanted to hear. Yes, so sir. Yes, sir. You have written in a very good classical, social welfare department. I'm reading question in order to address administrative legal concern related to staff members who fall under the ambit of the social welfare department. Will it be recommended to file a case in a tribunal? It does not sound anywhere in the question that whether it is a state government, whether it is a central government, whether it is a social welfare department pertaining to a state. So now you inform me it's a college, and now you inform me that the aggrieved person is teacher. Is it correct? Aggrieved persons are teacher, correct, ma'am? Hello? Hello? State government. This comes under state social welfare department. Yes. Yeah. And it is the grievance of a teacher, correct? College teacher. Yes. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Then you have to go to tribunal, madam, first. You should go to tribunal only. Okay? Okay. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Pooja, you may begin with the question. Yes, so my question, I'll go ahead with it. So it is question number 3 you are putting? Yeah, so basically Maharashtra's political scenario, that question. Yeah. So, sir, taking into account the multi-party system prevalent in India and Maharashtra's current political scenario, so do you think that the present anti-defection laws are sufficient that have served their purpose?
And or do you think that there is some ambiguity in the existing anti-defection laws? Now I am nobody to think. All the interrelated questions are likely to come and decided by the Honorable Supreme Court of India in the recent judgment about the entire political controversy of Shiv Sena, Shinde faction and Uddhav Thackeray faction. So even in that, I just checked, A to K, around 11 questions are framed to be decided by the constitutional bench. Even certain questions are related to this anti-defection law also. And even certain judgments are also likely to be considered. So it would be a landmark judgment for all the purposes. The anti-defection law, misuse of the same, role of the governor, role of the speaker. Then so validity, the validity of the people who defected from our party to another party, all these issues will be taken care of. So let us wait for that judgment. It will give us good guidance. Here I am nobody to give you any guidance. Yeah, got it. Thank you so much. Welcome. Isha, you can proceed with the question now. Isha Sharma. Yes, am I audible? Yes, you are. Yes. All right. So good evening, and firstly, Good thank evening. you so much for conducting these sessions for us. It's really helpful for us law students. So my question to you is that it's my personal problem actually. I had this personal issue. So, okay. Yeah. So I was a student in NMIMS law school earlier, Navi Mumbai campus. And I had withdrawn my admission in January next year. The admissions had begun around April, June. But then CET was conducted late. Maharashtra entrance test for law was conducted late in November due to COVID. And the second round of allotment was done in January the next year. So I got selected as a student for PGCL in January 2022, and my lectures began in Feb. When I applied for a refund, they rejected my appeal, stating that it's not according to their college policy. And whereas When you applied, in which month you applied? I had applied around March, and I had applied for a refund around March. Yeah, March. March, which March year? mid. 2022. Okay. Yes, sir. And I had various follow-up mails regarding my refund fee because according to the UGC guidelines, they can refund the entire fee up till December 2021. But then due to no fault of mine, the entrance exam got delayed and the second round of allotment also got delayed. And it is a government exam. Government conducts this exam. So I had written the same reason. I had stated that it's due to no fault of mine. Please refund my fee. But they and I told that if you will not refund it, I'll take a legal action. And after that, they refunded an arbitrary amount of 6,000 rupees, which is I don't know why they gave me that amount. But when I again applied, I again asked them ki at least meet me, let me put forth my concern. They are stating vague reasons, and then they are not letting me get my refund. They're not giving me my refund back. And I followed up again this year, sir. I got your question. Yes, sir. What should I do? I'm answering. You just tell me, after a refund of rupees 6,000, have you again written the letters to them? Yes, sir. I had written again in this year, April itself. Okay. I had written a mail again. Okay. Now, have you heard about the Fee Regulatory Authority in Maharashtra? No, sir. So there is a Maharashtra Unaided Private Professional Educational Institution Regulation of Admissions and Fees Act 2015. You just Google, you will find Fee Regulatory Authority. The Fee Regulatory Authority
is enacted in 2000 as per 2015 Act. This case will fall into that category. In the definition of that particular Act of 2015, the student and parents are stakeholders. The stakeholder definition is there. And in the function of fee regulatory authority, one of the function is that redressing the grievances of stakeholder. Now you said, as per UGC guidelines, they have to refund your entire fees. So on the basis of your claim and correspondences, Google it, find out fee regulatory authority. They have online mechanism also, certain online mechanism. Go and check it. Make an application, file a complaint there with all your grievances and correspondences, detail everything. Even mentioning about the UGC guidelines also, that how the fee has to be refunded. And accordingly, I believe you will get success. You can, if you feel you can seek further guidance from me, I can guide you also. I can guide you to somebody if required. You can take a number from Praveen Bhai and you can take guidance from me personally also. I'll guide you that you can meet somebody, then you can accordingly find the complaints if required. All right, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. So I'll be reading Mukund's questions since he can't unmute right now. Whose questions? Mukund Raj. Please. In the case of the government cancelling the exams for defense aspirants, what are the possible legal actions and remedies available to these aspirants who have completed all the necessary steps, including passing the written and physical test and appearing on the provisional merit list? See, I'm really surprised if the name they are selected also, it appears, and now their name is also flashing on the provisional merit list. I don't know then why government is cancelling the examination. It is really surprising. So what could be that reason is very important. If that reason only would have been written that these are the reasons, that particular reason is very important. Only that will give you a perfect cause of action, that whether, because certain times what happens, presuming that everything is cancelled because of certain leak of paper or certain foul play or certain corrupt practice, then probably no remedy is there. Okay. But if something is which is very trivial kind of issue, or which in the eye of the law probably no issue is there, or it's a very administrative issue which is the fault of the government or examination organizing authority, then writ is maintainable and probably the list can be restored also, and they may get to job. So the point is, the particular issue, the reason of cancellation is very important to take a remedy. And if reason of cancellation is very trivial, of very trivial nature or very unjustified nature, then definitely writ is maintainable. Writ can be filed against us before the High Court. Okay, so we are done with the questions now. With this, we come to an end of the session. Thank you for each and everyone present here. Thank you, Anjali sir, for taking time out for busy schedule and answering the queries of people present. Happy Akshaya Tritiya and Eid Mubarak. Lastly, can I add something? Permit me, yes, Venkat sir. Yeah, you're always there. See, what I'm trying to understand that see, in online virtual legal advice, lots of limitations are there. Like I have to in our clients, so we have to trust the person who are coming forward to raise their question, to ask their question. But good that this time all these questions were sent to me, and even all the details were also sent to me. So I was in a position to read and understand. So I was in a position to answer properly also all the questions. But still, whatever opinion I am giving or I am advice I am giving, it is only on the basis of the conversation or question raised to me or the fact given to me. Even all these opinion can totally change or completely change, take a U-turn, probably after looking into certain papers, certain documents or certain things. My experience suggests me, because I had been into various free legal advice to different colleges like SNDT and even KC Law College and many other. Mostly the tendency of the people is that, I'm not saying here all the law students are there,
people hide the fact also sometimes. They do not, they don't have a fairness in their mind, or they are scared of disclosing the negative side of their facts, and probably they mostly rely upon their positive side of the facts. So that gives lots of difficulty. So my request would be that first, the way the questions were sent to me, it should be continued, number one. Number two, people who are mostly coming with the complicated cases. So if the documents also can be forwarded, I never mind to read the documents. Of course, sir. I can look into that. I can look into that relatively as to answer the question, because I wanted, if I am online, I wanted to answer the question to the best of my ability and after understanding that people should definitely get benefited out of that. So this is today only I wanted to say something about that. And with this word, I'm coming over. I'm requesting you to carry on with the forum. 1 minute, sir. Praveen. I appreciate what Advocate Anjani Kumar says. Same was my concern also. That whenever we send the matter to him, we should have the supporting papers in support of what the person in distress or person in need of justice is asking for. So information with concrete evidences. So this will be followed next time, sir. We appreciate your advice. Thank you, sir. Venkatji. Yeah, Anjani ji, thank you so much. There are few questions which Pooja had raised about a lady called Aarti. She wants, as I already told you earlier, very embarrassing question which may relate to rape or infidelity or any such thing. So they would like to have a very closed door, which is also my opinion, which the public should not be private. So can you suggest a time by which such questions can be raised? Of course, we will let you know in advance and you can tell us. So on a one-to-one debate, like all the others will be absent, only you and the victim. And the person who is helping, like in that case, only Pooja may be present to help her out. So can you suggest a time? Yeah. Very, it can be done. I never mind. I mean, time, this time, like today only, it can be continued. If one person is there. No, all the others are present because it's totally personal in nature. So it can be done. It can be done this way also, that Pooja can give me a WhatsApp call and they can be taken on WhatsApp call. So WhatsApp call is very private. Only 3-4 people will be there and we can have a discussion on 3-4. Even WhatsApp call probably have a feature of getting 32 people. This is what somebody told me. So 4 or 5 people can talk over the WhatsApp call. WhatsApp video call we can talk over. So let them invite whomsoever they are comfortable listening to, the affected parties, and let all the others be absent. Pooja, are you okay with this? Yeah. Okay. So what happens is like that. You can give a call, or you can also, like in future. Now since this question was related to the person known to Pooja, she was also advocate. She's also advocate. Now I think that for the general audience, any such question, let it be addressed to Pooja and making it bracket personal, purely personal or confidential. So the Pooja can coordinate such meetings with Advocate Anjani Kumarji. Are you okay with this, Pooja? Because let us understand one thing. Let us understand one thing. We are trying to improve the webinar on a week-to-week basis. Compared to the first webinar, second was good. Today, we have tackled more than almost triple the questions compared to the previous webinar. So we are also learning, we are also thing, and the entire thing is possible mainly due to our great advocate Anjani Kumarji. He is extremely cooperative to us. And on behalf of all of you, we must give a big round of applause to Anjani Kumarji for being present here. Thank you so much, sir. And lastly, I have a suggestion. Yeah. Before you close down, this personal nature matter, it should be exceptional. Otherwise, it will become a routine. This is number one. It should be an only exceptional case and a decision to be taken by 3 of this member committee, which is there, Shivam, yourself, and Advocate Chawda, in consultation with Pooja. Very good. So these 3-4 people should decide, and then
the matter may be taken on a WhatsApp call. WhatsApp call is Well, what Anjani Kumarji suggested is best. Yeah, no, Over to you, otherwise, sir. Praveerji, such question Yes, sir. when Pooja gets it, if she forwards it to Anjani Kumar, if True. he's okay with this, or if this thing and all, I think we can take it up. Because this No, committee, what I am saying is deciding the question exclusively personal in nature or not. okay, I That got is your to be point. decided by the 3-member committee Okay, in consultation with Pooja. yeah, Very okay. true. Otherwise, That's everybody will come tomorrow that my case is personal. well, I really appreciate Praveen Patel. Yes, we will do that. And today we have taken a lot of questions compared to the previous this thing. And the entire credit, there are two persons who deserves the maximum credit for today's webinar. Of Add course, one point, our sir. chief guest Anjani Kumarji, and second is our moderator for today, Mansi, being a student, law college student, and she moderated exceedingly well. And my compliments to you, Mansi. And you also prepared the first minutes. See that the second minutes also, this meeting minutes also duly prepared and forwarded to me, and we will listen. As I already informed you, a disclaimer also look into Yes, it. sir. We'll add that. And yeah, Dr. Chavda had some point. Dr. Chavda, welcome. Yes, sir. You are, Thanks. yeah. Actually, I wanted to have one suggestion to relieve the burden of Video is advocate. not on. No, Please there is some open glitch. Yeah. Okay, not issue. Please carry on. Okay. So to relieve the burden of advocate Anjani Kumarji, right? He's so generous that he is demanding for the documents also. But if everybody is going to send all the documents, I think his burden will be very huge, to be honest. Right. So to alleviate his burden, I think that we should be first of all scrutinizing those questions, and then out of those questions, whichever the documents are required, only those documents should be forwarded to him, so that his burden is getting really relieved. Otherwise, he'll be overburdened, to be honest. Very true. Chavraji, I really appreciate that. And when you mentioned this point, I also would like to inform our guest speaker, Anjani Kumarji, the volunteers here have volunteered on their own self. They can help you with the legal papers and all the documents we prepared. And anytime you are free to approach us so that the many of the paperwork, so that your office is not burdened with too much paperwork. These volunteers can prepare the initial paperwork, other thing and all based on your guidance. If it is okay, this thing, I think we can utilize their services. As you have already seen, they are quite brilliant students, and we can they also get a training, and they also can substantially reduce your workload. This is one of my suggestions. Agree, sir. Yeah, Mike, Anjani ji, Mike. One more thing I would like to add here, that if any of the student who wish to coordinate with me, even take some advice, they can take my number from Praveen Patel ji. They can, after taking my time, and they can ask me questions, they can meet me, they can assist me also in few matters. I'm handling few big matters, and very, the virus challenge in constitutional issues before Bombay High Court. Some good matters I am handling. So where any of you feeling interested, they can come and they can assist me. But definitely it will be for a certain period or assignment wise. If I'll be having place, then I can accommodate. Otherwise, it would be only assignment wise. So this is, I'm just giving an open offer. If anybody is willing to, they are welcome. I fully appreciate your gesture, sir, because since you are the very senior lawyer, I think you must give first let them send you a message and you give them the appointment at that time, because you are very busy, so they should not be interrupting you during when you are in a court or some busy work and all. Maybe a time after 5 p.m. or 6 p.m., something like that, because so they don't disturb you from morning onwards. This is just my suggestion. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Yes, sir. Nothing else is there. Once again, thank you, Anjani Kumarji. And it was a very lively get together that today we had got a very informative legal advice, which all the students also got and participants got. And once again, compliments to PCGT for sparing so many volunteers, and also the Federation
they think for organizing this event. Last but not the least, Praveen Patel ji, who have taken a lot of pain in making this event possible. Thank you all, and have a nice weekend here. Okay. Thanks you all. Namaskar. Thanks you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। हेलो, बहुत अच्छा लगा मीटिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छी मीटिंग है। सत्येंद्र भैया सही रंजीत बोल कुमार रहे जी, हैं। आपका आवाज माइक से बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मैं नंबर ढूंढ रहा था, नंबर नहीं मिला मुझे। मानसी या आपके यहाँ से आवाज आ रहा था। नहीं नहीं सर, मैं तो बहुत शांत जगह पे हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं है, है। डोंट वरी, इसकी रिकॉर्ड है। कोई रंजीत बात कुमार नहीं, sorry, ETSA, कोई महिला देखेंगे। बच्ची है, उसका आवाज बीच बीच में आते रहता था, जोर जोर से बोलती थी। अच्छा अच्छा, एनीवे थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। धन्यवाद सर। या ये कैमरा का फिर प्रॉब्लम हो रहा है, If you have any बदलना more पड़ेगा। please bring it to our forward. Don't hesitate here. Don't feel shy. Okay. सर प्रणाम। There is no question which is silly here. Every question is a question. Yeah, Pooja, Mike, yeah. So actually, I have a doubt. So the WhatsApp call option, which Anjani Kumar sir presented, so that would be a WhatsApp voice call or a video call. That's the slight confusion which I have. No, that we can. First we can. No, it is both. Choice is yours. Okay. You can go for video call also. You can go for audio call also. Yeah, and video call. If the victim is comfortable, then no problem. Yeah. Because second option I can suggest. Our counsel also sees the victim, so the empathy will be there. And when I see a dignitary, automatically the respect comes. Like now, even my voice tone, when I see Anjani Kumar ji, automatically the way you sit, the way you talk, everything changes. But when I'm on a stage call, I may be sitting in a corner, having a cup of tea and other things, everything changes. So like when you wear a jacket and a tie, the voice tone automatically changes, our behavior changes. So basically, depending on the comfort level of the victim, that you decide. Okay. In that also, Venkatji. Yeah, Chawdaji. In that also, there is another provision which we can utilize, and that is a Google Meet. In Google Meet, one link sustains for infinite time. There is no need as such to create another new link, right? So if we create one link, that link is to be used every time whenever we want any confidential meeting, so that new link generation, reminding, and all these things will get eliminated. Chawdaji, please, I am not aware of that thing. Can you take up that matter? रंजीत जी रुकिएगा, हाँ, आपसे बात करना है। गूगल मीट में एक लिंक हम लोग पर एक जनरेट कर देते हैं ना, तो वो परमानेंट रहता है फिर। है ना? तो एक लिंक, हाँ, जिस किसी को भी यूज करना है उसको दे के हम लोग एडमिट कर सकते हैं। एडमिन जो होगा वो जनरेट करके एक ईमेल आईडी हम लोग रखेंगे, जैसे फेडरेशन का, जीमेल का, और उसी के थ्रू लिंक जनरेट करके वही फाइनल रखने का हर बार, फिर वो परमानेंट यूज हो सकता है उसका। This is your responsibility. Please do that, and you are an expert. प्रवीण भाई से बात करके एक लिंक मैं बना दूंगा, पक्का, श्योर। प्लीज। अरे बाबा, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, यू गो अहेड। नहीं, वो ईमेल चाहिए ना सर। फेडरेशन का एक ईमेल। अच्छा, अब रंजीत कुमार से रिक्वेस्ट करते हैं एक गाना गाए। ईमेल और उसका पासवर्ड मुझे दीजिए बना के, तो उसके थ्रू मैं लिंक जनरेट करके दे दूंगा। ओके, वी विल डू दैट। क्योंकि मैं बनाऊंगा तो वो मेरा लिंक एडमिन मैं बन जाऊंगा बाय डिफॉल्ट, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, वो नहीं, फेडरेशन का। हाँ जी, आपको देखना चाहता हूँ, वीडियो क्या हो गया आपका? वो वीडियो मेरा कैमरा हर बार थोड़ा है ना, वो मैं कनेक्ट करता हूँ, ग्लिच हो जाता है। या रंजीत जी, माइक बंद कीजिए, खोलिए। रंजीत कुमार जी, रंजीत कुमार, माइक अनम्यूट कीजिए। वो चले गए कीजिए। है क्या? है, बैठे हैं। पालनपुर में बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया था। अरे गीत भी अच्छे गाए थे उन्होंने। हाँ, वही तो, इसीलिए तो बोल रहे हैं इवेंट में। वेंकट जी, आप बोलिए उनको, हम लोग की बात नहीं समझ रहे हैं। रंजीत कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। रंजीत जी,
रंजीत जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। अरे रंजीत जी उठाइए, इधर बिजी हो गए। नहीं, उनका आवाज शायद नहीं और स्पीकर बंद कर दिया होगा। और स्पीकर ही बंद लगता है। कनाडा से जुड़े हैं जगदीश बारोट साहब। अरे हाँ जी, जगदीश बारोट साहब। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत सबसे दूर तो आप बैठे हो। हाँ, मैं एक्चुअली आज वो हमारा वेबिनार है ना, वर्ल्ड बुक डे है, तो उसके लिए दे हैव अरेंज ए वेबिनार। तो मैं इसके लिए चेक करता था क्योंकि टाइम डिफरेंस है ना, तो आई थॉट लेट मी चेक इफ द प्रोग्राम इज स्टार्टेड और नो। स्वागत है तो खत्म होने के पोजीशन में है। कोई बात नहीं, आई विल लिसन टू योर प्रोग्राम। और तो कनाडा आपको के लिंक बारे कैसे में मिली? कुछ पूछना हो तो पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू। क्या सब्जेक्ट है आपका? आज का सब्जेक्ट है टुमारो इज वर्ल्ड बुक डे। Okay. So on the eve of World Book Day, we are going to, increase the reading habit of people. So we will, explain the importance of books reading, what are the advantages and how it could be, enhanced. और खास करके तो जो युवा वर्ग है और बच्चों को कैसे पढ़ाई में दिलचस्पी क्रिएट की जा सकती है, उसके क्या बेनिफिट है और व्हाट द ग्रेट पीपल आर सेइंग अबाउट द बुक रीडिंग, ये सब बातें करेंगे हम। क्योंकि और कुछ पूछना हो तो पूछिए। पूछने का तो एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ। हाँ जी। हम रीडिंग हैबिट लोगों की बढ़ाने की बात तो करते हैं, हाँ, मगर पढ़ेंगे क्या जब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के किताबों में उलट पुलट करके ऐसा कर दिया है कि जिसको पूरे इतिहास को जिसको कहें कि सत्यानाश कर दे रहा है, तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको धन्यवाद। इसके दो जवाब है मेरे पास। एक तो पहला ये है कि आज के सेमिनार में ये भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पीपल डोंट नो व्हाट टू रीड, सो वी आर गोइंग टू गाइड देम व्हाट दे शुड रीड। ये पहला सवाल है। और दूसरा जो आपने बताया कि अंधेरा छा गया है, हम भी बहुत व्यथित है यहाँ बैठे बैठे। हम मातृभूमि से मजबूरी की वजह से यहाँ आए हैं, मगर हमारा दिल वहां है, शरीर यहाँ है मगर दिल वहां है। और मैं ये समझता हूं कि इसके ऐसे आज के माहौल में जब इतना अंधेरा है, तब मैं ये सोचता हूं कि आजादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे हमारे वीर योद्धा लोग, तो कितनी बड़ी निराशा थी, चारों ओर निराशा थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं गंवाई थी। तो हम यहाँ बैठे बैठे यही कर रहे हैं कि strengthening of people, empowering of people and educating people so that they can find out their own way out. प्रॉब्लम तो है ही, नो डाउट, मगर इसमें से रास्ता निकालना है। और मेरी उम्मीद है कि सत्य का हमेशा विजय होगा। थोड़ी देर ऐसी आती है कि जब हम बहुत पजल में आ जाते हैं, बट हमें हिम्मत रखना है, बहादुरी से सामना करना है, और हमको जरूर शक्ति मिलेगी और हमारा विजय होगा, ये मेरी उम्मीद है। मैं तो हिम्मत नहीं हारा हूं। यहाँ बैठे बैठे 3-4 महीना हर साल मैं इंडिया में आता हूं और वहां आके हर रोज कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम करता हूं, क्रिएटिव रचनात्मक कार्य करता हूं, बच्चों को बुक्स लाके बेचता हूं, टीचर्स को एजुकेट करता हूं, टीचर्स को उनको मोटिवेट करता हूं, युवाओं को पास जाता हूं, पैदल यात्रा करता हूं, विज्ञान की विचार करता हूं। तो मैं ये छोड़ता नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि ये अंधेरे के युग में हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है। एक और बात बोलूं क्या? हाँ जी, हाँ पूछिए। हम लोग जुडिशियल फील्ड में काम करते हैं। हाँ जी। और जुडिशरी के फील्ड में हाँ हाँ लोगों को अधिकार की जब हनन होता है तो हम लोग पिक्चर में आते हैं। हाँ। अब सवाल ये आता है, भारत की जो न्याय की जो व्यवस्था है, हाँ, उसके अंदर आज के दिन में करीब करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग है, लंबित मुकदमे।
हाँ, तारीख पे तारीख का खेला चलते रहता है। हाँ, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? What the ये people in बहुत Canada अच्छा are सवाल thinking है। about it? मुझे भी ये होता था, मगर देखिए कि मैं बताऊं, कनाडा तो हमारा बहुत छोटा देश है, 4 करोड़ की बस्ती आबादी है, ओनली 4 करोड़। और यहाँ तो बहुत ईमानदार लोग हैं, मोस्ट ऑनेस्ट पीपल है। फिर भी मेरा एक छोटा सा केस था कोर्ट में, 2016 में मैंने ये कोर्ट में केस किया था। मुझे थोड़ा इनजस्टिस हुआ था, तो अभी 6 महीने पहले जजमेंट आया, 6 महीने पहले मैं विजयी हुआ उसमें, मगर 4.5 साल निकल गए। आप समझ सकते हैं, इतना छोटा देश है, यहाँ ज्यादातर लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं। फिर भी ये प्रोसीजर ऐसा है, डिले होता ही जाता है। लोग सामने वाले डेट मांगते हैं, जज छुट्टी पर होता है, कुछ अनचिंत ऐसा कुछ आ जाता है बाधा, तो ये डिले इज ऑब्वियस इन जस्टिस। और ये कहावत भी सच्ची है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मगर हमारे जैसे ये सब जजेज हैं, सब अच्छे एडवोकेट भी है और चिंतक लोग भी हैं, इन्होंने भी ये सोचा होगा, मगर ये दिस इज इन अनएवॉइडेबल पार्ट ऑफ जुडिशरी, ऐसा मैं मानता हूं, और विलम्ब तो होगा ही। अब इसका ये सब लोग हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स है, वो सब चोर तो नहीं होंगे। सम आर डेडिकेटेड ऑल्सो, सम आर वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो ट्राइंग, दे आर थिंकिंग। जैसे कि कपिल सिब्बल जी है और कई हमारे प्रशांत भूषण जी है, वैसे मोस्ट लॉयल लॉयर्स भी है। फिर भी ये इनके बस की बात नहीं है, इसीलिए ये एक्सेप्ट करके चलना होगा हमें। देखिए, आपने जो बात कहा उसी को मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूँ। जरूर। आपको कनाडा में 4.5 साल में फैसला मिल गया। हाँ, यहाँ तो 4.5 साल में केस खाली एक लोअर कोर्ट में ही पूरा नहीं होता है। 70% केसेस में जो, सुनिए सर, 5 करोड़ जो केस पेंडिंग है, मोस्टली 70% केसेस आर ओल्ड फॉर मोर देन 4 years और 5 years। प्रवीण भाई, मेरा 70% नेशनल कमीशन में प्रवीण भाई मेरा केस चल रहा था, 4.5 साल तक तो एडमिशन स्टेज पे था, 16 हियरिंग हुई। नहीं, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। एडमिशन स्टेज पे 16 दूसरी बात, इसका एक मिनट कारण सर, क्या है सर, मैं बताऊं देखिए आपको। आप एक मिनट, बारोट साहब, आपने जो कहा, बहुत अच्छे एमएलए एमपी भी हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भारत की संसद के अंदर अभी जितने भी सांसद है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम हैव क्रिमिनल केसेस ऑन देम। मैं मानता हूं जरूर, मैं तो बोलता हूं कि 2-5 तो अच्छे हैं ने, 75% ठीक है, छोड़िए, अभी ये प्लेटफॉर्म दूसरा है। एग्री विथ यू। आपके कांटेक्ट डिटेल्स व्हाट्सएप पे, इसमें मैसेज में, चैट में डाल दीजिएगा। आपको हम लोग इंटीमेशन देते रहेंगे जब जब आपकी इच्छा हो, या दोस्त हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन। देखिए, मैं एक और बात बताऊं, मैं बुरी चीजें नहीं कहना चाहता हूं, मेरे देश के लिए काफी अच्छी चीजें हैं, हमारे भारत के लिए, मगर क्या बुरी और है अच्छी कि की बात नहीं आबादी आती है, इतनी हकीकत की ज्यादा बात है, होती है। आबादी। और कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मैं आपको कोर्ट में केस दाखिल करके परेशान करूं, ऊंचा नीचा करूं और आपको कोर्ट के धक्के लगा दूं। तो इसके लिए थैंकलेस केसेस आर आल्सो एडमिटेड इन द कोर्ट। खैर, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी सेपरेटली, काफी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स है, बोर हो जाएंगे। या नहीं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। या प्लीज, आप यू आर ऑलवेज वेलकम। हम लोग की लिंक कहाँ से आपको मिली? मैं ये हमारा जो एक वेबिनार चलना वाला है ना, उसकी लिंक दिया था, वो अश्विन कारिया साहब है, आप जानते होंगे। हाँ। या अश्विन कारिया साहब से मैं संबंध रखता हूँ और हमारे काफी अच्छे स्नेही हैं, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आई हैव टू गिव अ टॉक टुडे। आप कुछ संस्था चलाते हैं क्या कनाडा में? जी, आप कनाडा में आप कुछ संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो क्या? नहीं, मैं यहाँ की कॉलेज में प्रोफेसर था, अभी रिटायर्ड हो गया। आई एम 76 years old नाउ।
तो अभी अभी रिटायर्ड हुआ हूँ और मेरा ज्यादातर काम इंडिया की सेवा में व्यतीत करता हूँ। यहाँ बैठे बैठे मैं काफी काम करता हूँ इंडिया के लिए। बहुत बढ़िया सर। चलिए वेंकट जी, लेट अस क्लोज। धन्यवाद जी। आप लोग भी रंजीत जी इतना गाना कीर्तन गाएंगे या करते हैं बंद और करेंगे? इतना एक्टिविटी करते हैं, तो आपको भी धन्यवाद और मेरी शुभकामना। आप कनाडा से किसके क्या वैंकूवर में है क्या टोरंटो में? नहीं, मैं यहाँ डिट्रॉइट के बगल में एक छोटा सा टाउन है विंडसर, यहाँ मैं पढ़ाता था, तो आई हैव सेटल्ड ओवर हियर। इट इज अ स्मॉल टाउन, अबाउट 1.5 लाख की पॉपुलेशन है और बहुत छोटा टाउन है। कौन से सब्जेक्ट सर आप लेते थे? लॉ में है? I am an environmental specialist. I was working with United Nations as advisor, but then I retired there from 62 years, and then I joined college here. I taught for almost 12 years, and now I have retired. Oh, very good, very good. Yeah, Venkat ji. Let us conclude Thank you. now. आप सबको हमारी शुभकामना। धन्यवाद आपको। Okay. Thank you, Praveen. Thank you, Mansi. Yeah. Thank you, sir. Pooja, closing comment from you? Pooja, कुछ बोलना है? Let. No, sir, that's it. That's it from my side, and I'm grateful for this opportunity. That's all. Because through this, at least I got to know that particular confidential case. So I am contacting her mother, like the victim's mother and all. So through that, I actually get to know what the reality is. So it's important to know. It's not just always a utopian world कि यहाँ सब ही अच्छा होगा. तो कभी-कभार दूसरा साइड भी जानना बहुत जरूरी है. तो वो समझ रहा है. Looking at the केस स्टडी के पेपर ऑलरेडी अंजनी कुमार जी को भेज दिए गए हैं। Yeah, वो already भेज दिया है. This particular thing you don't have to refer to other committee. You already got the clearance. Okay. Yeah. About the RC case, okay, you already got the clearance with Anjani Kumar. Okay. I think over to you, Mansi, to declare closer today's closer. Yes, thank you so much for giving me the opportunity to moderate. This is like I'm doing this for the first time. No, you have done a good job. Very good. Thank you, sir. Pooja has set the ball. Yes. Bye. Bye. बेटा टामेटा ने तो छे कई जो छे डુંગળી टामेटा ने બધું તો છે ગ્રેવી બનાવવામાં તારી બાને થોડું દુઃખ થયું છે મેં પલાડ્યા એટલે પણ મને એમ હતું કે બેટા શાક બધાને ચાલે નહીં અને તો કઢી કરવી છે કઢી નહીં સારી લાગે બેટા મજા આવશે કરો ને બેટા અરે કઈ એવું કશું નહીં બેટા આપણે બધા ઘરના માણસો છે આ મહેમાનો એટલે
કઈ મેવા નથી, છોકરાઓ છે ને આપણા ઘરના જ. દાળ ફ્રાય કરી દેજો, છોલે દાળ ફ્રાય ને રાઈસ, પરોઠા લઈ આવું છું પાટલી આપતી. એવું કરી દેવાનું. દાળ બાફી નાખી દે. પેલા વિચાર આવ્યો મગ પલાળવાનો. હા, દાળ ફ્રાય રાઈસ અને છોલે કરી દઈએ અને પરોઠા લઈ આવીએ. ના બાપા કરને રોટલી, અમે શું કરો આવું કરો છો મારા દીકરા? સરસ લાગે, રોટલી ના ભાવે એટલે. એવું કશું નથી બેટા, આપણે ઘરના માણસો છીએ. પરોઠામાં રોટલીમાં શું ફેર છે? થોડું છોડી કે જમાઈ ઘેર આયા છે તે ચિંતા હોય. તમારી ઈચ્છા તો ચાલો પરોઠા લાવજો ભાઈ. હું તો તમારું દોડા દોડી ના થાય એટલે કે મારા કુમાર છે એટલે. કારણ કે તું આખું ઘર આપે પેલું બી પૂરી કરી છે, કારણ કે ભવિષ્ય કઈ થાય ને તો મોટી વસ્તુ છે. તમારું પેન્ટ ને અહીંયા છે, હો તમારે જોઈતું હોય તો આપું. પેન્ટ ને બુશર્ટ અહીંયા ગઈ વખત મૂક્યા હતા ને, ધોઈને આપ્યા છે, એટલે તમને જોઈતા હોય તો આપું પહેરવા. અમે આ કુકર નું ઢાંકણ છે ને પછી એની જોડે જ રાખીએ. ના 2 વાગે નવું જ છે. મેં કીધું જૂનું લાવીએ પપ્પા ત્યાંથી લાવ્યા છે. નાનું કુકર મૂકીશ. બદામ પલાળી છે તમારે. તમારે કામ કર્યું છોલે નો પેલો મસાલો મૂકે છે. ખાલી તું પેલું બટર માં એ કરી અને મેગી દો. તો પછી છોલે નું તો દાદાજી કહેશે તો મંગાવી લીધું. મસૂરની દાળ લાયા છે. પછી વાસણ જોયા પડ્યા લોકો વાપરે સાકે નહીં વાપરે. હારી ડુંગળી ક્યાં તો પછી ડુંગળી વાળા હાથ પછી કરે ચામાં વાસ મારશે ત્યાં થઈ જ ગઈ છે. પપ્પાને લઈ ના ના ખોટા પૈસા
કરિયાલ ને ના એને સ્કૂલે જતા પીવે છે અને પછી બે બાર ને એવું ખાય છે. ખુલ્લું છે, ખુલ્લે જ છે. હા તો એ તો આરામથી ખુલે. લાઈવ ખોલી આપો. પૂરી કરો છો? સારું કરો. તો આ છોકરા આપણે જમવામાં પૂરી કરો તો શું વાંધો ના ચાલે? અચ્છા સારું, ચાલો પરોઠા કરજો. એવું હશે તો પછી આપણે એક સાકડી બનાવી તો બની તમે આયા છો તો સરસ લાગે છે. પહેલા જે ફોટા દર્શન કરાય ભગવાનના બધી પોતે બનાય છે. ચાલી હજાર તો ભાડું આવશે. આનું એ સર્ટિફિકેટ આપે છે અને આનંદ બધા કહેશે મળતું બધાય પાકી જાય છે પૂરતી એ મને ના કહેશે જ નહીં. પાછો વિચાર કરું એમ પોઝિટિવ એ કેવું આવતી ને ઉપર તો હું નાખું તમે આ ગેસ ની કમ્પ્લેન કરી આવજો ને. ગેસ નથી, ગરમ જ નહીં થતું. કાલ કરી આવજો. શનિ રવિમાં કોઈ ના હોય બધા. સોમવારે કરી સોમવારે આ શનિવાર થી રોજ જ પૂરો પાડે તું જુઓ છે ને પૂરી કેમ ના આઈવામાં તો સરસ ચાલતું હતું પાસ પછી ધીમો છે એને મને સિનિયરો માટે આવું રાખતા હશે એટલે તમે કમ્પ્લેન લખાઈ ઉપર આવે તો માન થઈ જાય તો કોઈ લખાઈ દે મમ્મી તો પછી રોજ જમવાના તો પેલા જ વિચાર નેગેટિવ આવે છે નહીં ગમતા નહીં બેટા વાત સાચી છે હું તને એમ કે ખોટી છું પણ એ બગડ્યું છે ફિક્સ કરી દેવાનું રોજ
એટલે તારા કેસ પર તો ખુબે થઈ ગઈ. આ તો મસ્ત ગમ. તમારા જાઓ બોતે કે તમારે બેન જ કામ બે બાકી જો કોઈ ક્યારે ચાલે એ મુખ પર મુખ ડાઈન કર બસ હવે ના કરતી બે જ પડી મૂકી જોવા ઘરે તમે નાસ્તો કરીને જાઓ તો મારા રહેલું થાય તો વાંધો નહીં બધા કામ પતાવી લો જોઈએ મને કોઈ ક્રિએશન નહીં ના ના ખબર નહીં પપ્પા આ છોકરો કેટલું મહિનો રહેવાનો છે આ છોકરો મહિનો રહેવાનો આમ તો આપણે રાખવો એટલે એને કહીશું જો તમારે ખાલી કરાવવું હોય તો એને વિનંતી કરવી પડશે કે ભાઈ તું બીજે શોધી લેજે અમારે બીજા માણસો આવવાના છે આખો પરિવાર એને આપવાનું છે એવું કહી શકીશું આપણે અને રાખવો હશે તો રાખીશું એ પરિવારને તો તમે ભગવાન નાખો ને એક દિવસ ભગવાન નાખો એક દિવસ એવું છે સારું બહુ ભક્તિ ભક્તિ છે એની કોઈ વાત નથી બોલી આ તું હું મમ્મી માટે લાવી ને મોટો ને એમને નાના પેલો નહીં પેલો કેમ હા તમારે કેટલા રૂપિયા ચાલુ કરો 10 ત્યારની ઉઠી છે મને એ તો જાગું જ છે મારે પેલી ટાઈમ થાય એસમાં 2 વાગ્યા હજી પાછું જો કરો કઈ થતું નહીં રસુભાઈ કે બાત ઉપર મમ્મી એટલી કે કરે છે બધા બહુ ખાવ દાદાજી લઈને એનામાં પહેલા કાઢી ઢોળી મેં તો પી લીધી થોડી છે ના પપ્પા તો મારી બેચારી લઈ જાય અરે પછી તો આમ બધી બીજી જે જોબ શોધે ના યાર પછી તું તો ફેમિલી સમજે ને પેલાનું અરવિંદ વાત છે કાઢવાની ચમચી આવે છે નાની માંડો છે 2
મને તો તે દિવસે નીકળી જાય ને એવું કે આગળ જારા જેવું કેમ આવી ચંદ્રાને છે ને ગોળની બહુ ટેવ છે બધા મારે તો કદી ગોળ હતો આ ગળી તમે ખાઈ તો જો ગળી છે સારા છે ગળી નું કરો બના ખાતે પણ બના જેવો મસાલો હોય એ રીતે બને આ તારો ફોન લીધો ને થોડી જમ લાગે ઘરે આમાં રહી બધા ગોળ હતો હા અને પેલું તો ત્યાં પૂરી બરાબર છે બધું મેં તો મારા હાથે જવાબ સરસ કુમાર બસ બસ ऐसे जो खासे उठी શું કરે હું આગળ આગળ કાઢું હું એને મળે કોઈ પાકને બે વર્ષ સુધી કાઢે તો આગળ પેલા મોર્ગેજમાં કેટલા પૈસા પડે મોર્ગેજમાં કેટલા પૈસા મહિનાના બાજુ 24,000 તો 50,000 તો તમને લોસ થાય પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ પર ઠંડો છે સરસ પણ લોસ આવે નહીં થાય ને તો પ્લસમાં જઈએ અત્યારે તો લોસ થાય ને પછી આ એક 2 દિવસમાં આ બધું તને લાગે તો ઘર બગડી જાય મને એવું લાગે પછી આપણે વાત કરીએ પેલા મસ્ત મોટામાં ઉકાળેલી પપ્પા ચા પીધી ના બેટા મારે ને આજે જ કોફી પીધી નકર તો પેલો ગરમ પાણી ને લીંબુ નીચે તો તેમ મત ના કરે અમે લાયા તે મત સરસ છે તો બેટા મત અમે મત લાવી દીધું પાછું પેલું લાયક જ પાછું આપે નટુબેન કહેતા હતા નહીં લાવતા ને પાછ જોડે બુકમાં રાખતી મોટી બોટલ પડી પેલું કાચું મધ હોય ને એની જ કુમાર તો અમારે છે અમે મધ જ નાખે ખાટો સોના બહુ સરસ મારે શનિવાર સકરી બાપો તો મગજ પછી ચા બગડે છે સકરીને દૂધ તમે ભાવ છે કઈ એટલી વાર છે અત્યારે ચીડો કરવો કે પણ આ બધું
Like yes, that okay, that. That okay, no many for. મારા અથાણા બરાબર છે ને પેલું આપણે કેટલી આપણે નતું બનાય તો કેટલી ખબર પેલું પાછળથી નીકળી એકદમ પાછળ અચ્છા આ બધું કાઢી કેરી મળે તો લેતા આવજો તો આપણે નાખતા રહીશું ખાટું કરવાને તો અમારે તો ખાટું બેટા પેલા બે ગોધડા મૂકી આવજે ને અમારે બહુ મકડાટ પડે શું કર્યું કુકર છે મૂકીશું તો પેલામાં કરી દઈશ નાના પછી ખબર પેલા પલંગ નથી તો ખસી જાય એમાંથી લોકો ફાવે એવું નથી બેટા ખરાબ નથી પણ ઊંઘતા ના પડે એટલે એના ઉપર પેલા આ બે ગાદલા મૂકીશું ને ઊંચું થઈ જશે ચિંતા ના એમને બિલ છે ને એટલે પછી ઊંઘમાં ખસે એવું છે જોઈ લઈશ એનું લોક થાય હોય તો ઠીક છે બેટા બે મફત આપેલા છે પૈસા જ કરજે બરોબર છે પપ્પા પણ પેલું નહીં ફાવે તો કાઢી નાખીશું વ્હીલ છે તો વ્હીલ કાઢેલા છે એ પેલા મેડિકલ ના છે જોઈએ કદાચ ઊંચા નીચા કરવાના હશે મારો વિચાર એવો છે કે એના ઉપર બે માં આ એક એક ગોદડું મૂકી દઈશું એટલે ઊંચા થઈ છે છતાં તમને ઠીક ના લાગશે તો કાઢી નાખીશું मैं सोच लेता है डाइनिंग टेबल कुर्सी लगी मामा क्या से कुछ सरस पूरी खाओ પછી ભૂખ લાગે વિચારો પછી કરો વિચાર મને વિચાર આપણે ખાઈ લોકોને બધાને પધારેલી છે ખજૂર બીજી છે ડુંગળી બધા છે ને લાલ અમે પણ ચણા કેટલા છે તો પાણી પછી ઓછું નાખ્યું છે ચણા વધારે છે ચણા બહુ છે કઈ વાંધો નહીં અડધા થાળી મૂકી રાખજે બાફેલા મૂકી દઈશ હા મૂકી રાખજે થોડા આપણે પછી ગમે ત્યારે ખાઈ લઈશું પ્રાર્થના અહીંયા કરી દેજે તો ત્યારે શાંતિ Yes, no project. ત્યાં જોઈએ છે કોઈ નથી ત્યારે જોઈએ લે મને આપી દે પછી તું ના આપી દે ના એટલે તું પીવાનું હોય પૂર્વે કીધું તો એના બગડે નહીં એટલે એક વાર પીધી લે તમે લઈ લો નીચે મશીન કાઢી દે આટલી બધી નહીં પીવા મશીન કાઢ્યું ચેક નહીં પાડતા ક્યાં છે સારું કાઢી એમ કહું ના કોકને એમ થાય કે ચા પી જઈએ સાચી વાત છે પૂર્વે
અમે આવા માની જોઈએ પૂરી અમે અમારી જો પૂરી બે જ છે ગણપતિ પપ્પા ના દો પપ્પા શનિવાર પર સાહેબ આનું ચાલે તો ખવડાવે હો પૂરી. હવે તો આ જીવ ના ખાવ ચાલ લસણ ની ચટણી વાટી લઈશ પાણી નથી નાખતું કાલ સવારે જ જશે ને કાલ ચા પાણી કરીને થઈ જજો ના પછી હારે મોડું થાય 2-3 કલાક બગડી જોઈએ છે પેલા આગે આજે તો જો પૂરું ના આપણે એ લોકો આપે ને મમ્મી પપ્પા સારું પડ્યું દાળ તો કાકા બહુ ઊંચું છે પેલું મમ્મી નું ઊંચું કરશો એવું કરજો ને આપણે તું કહો તો બેટા ગાર્બેજ મમ્મી ની ટાઈમ બહુ નીચું પડે મેં એ લોકોને આપ્યું ને કે ઊંચું છે અરે મારા પાસે બે છે બીજા એ છોકરાના હવે આનું શું બંધ કરે મેં નથી કરી થઈ ગઈ છે ના મેં કરી ઠંડો થઈ ગયો જો એ પડ્યા બે એ છોકરાઓને આપવો તે આપજે ને પેલું અમે લઈ જાય પેલું પ્લાસ્ટિક નું તમે રાખજો ઊંચું છે ને તો મમ્મી ને પછી તકલીફ ના ડુંગળી કે અહીંયા છે કોઈ તકલીફ જ નથી અમાશે મૂકવા દો ક્યારે ચા ના ના અત્યારે પેલા મરચા પેલા લવિંગિયા છે લસણ લસણ એ સબ મોડે પેલા રાતના 5 થવા દે કારણ કે પછી ની પાછી બીજી સીટી વગાડવાની અરે એમ નથી કાજુ છે કાજુ મગજતરી લાલ મરચા ખાઈશું કડક હું આ છોડીને તૈયાર પરાઠા લઈ જાય હું જઈ આવું છું મારા અમે શુક્રશ્વરમાં શાંતિથી ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો છું વાત કરીએ મને પેલું મોટું ચપ્પુ છે મેં બેઝમેન્ટમાં જોયું તે બેસી આવું પપ્પા ગુરુ પપ્પા ક્યાં ગયા મમ્મી ગરમ લાય છે આ બાજુ અહીંથી હરી છે
દોસ્તો પછી હવે દાળ મૂકી દો દાળ પેલી કરવી છે દાળ ભાત કરું છું તો સીધી સ્થિતિ મારી દઈશું અને એ પછી પાકને કરી આવી જઈએ તારે કેમ ના કરવું પડે હા તો પછી આદુ ને લસણ નાખી આપું કરી દો ત્યારે પાકને પતી જાય ત્યાર પછી તારે બીજા કામ થાય તો પછી છોલે બી થોડા કાજુ લેવા લેતી આવે ને કીધું છોલે કરવા આવે તો એટલે ના મમ્મી ગમે તો કાજુ હશે ના ના તો આ બધું કરતા નહીં કાજુ તો પપ્પા હા મમ્મી નું છે મારે ત્યાં રસ્તા પડી અમારા તો મારા હાથમાં બધું બહુ હતું એટલે મને લાયા મને બે મતો જ છે એટલે જ નથી મને છૂટું છૂટું બહુ રાખે મારા હાથમાં ખોલવાતું જ નતું મારતું બીજા એને કેવું પડ્યું બાપા દાઢી નું આવી જાય ને પેલા ઘરે પૂરી પેલું એ ક્યાં કે બાસ્કેટ કપડા પલાળ એમાં એક બાથરૂમ મૂકે છે કપડા ભરે પપ્પા મેં આજે જોયું કે પાટના કબાટમાં બહુ બે બાસ્કેટ વાળી કપડા છે એના એટલે હું એને પૂછ્યું કે તારે ધોવાના છે કે વાળી મૂકવાના છે તો ધોવાના હોય તો લેતી આવું પણ ત્યાં તો ખાવાના છે ને મમ્મી કશું કરતો નહીં ત્યાંને તો આમાં બહુ શ્રેષ્ઠ યશવંત થઈ ગયા તો તું કરે તો ત્યાં ટોપી કેમ કીધી આ તો પેલા વાળ ઉભા છે ને એટલે પેલો સેમિનાર વખતે વાળ બેસે ને એટલે મસ્ત લાગે છે એવું અડીદાસ ની સરસ છે ના ખરે છે ને બધું તમારે જીવતી હોય તો લઈ જજો યશને ગમ છે પૂછી લેતો બહુ જ છે મારી પાસે આવી એડિડાસ ની નહીં પણ બીજી ભાત ની છે ના હરિદાસ આ જીવતી હોય લઈ જજો હજી યુનિવર્સિટી ની હતી પડી છે કાં કેટલા લેવાના એ પ્રમાણે એટલા જ બધા તો મમ્મી બહુ પડશે તો પાટના ડબ્બો ભરી દેજે આપણે વપરાય તમારે લઈ જવા હોય તો પ્રોજન કરીને રાખી દેતા હોય તો તું જોબ કરે છે લોકો તાજા તાજા મને એવું મારે કોઈ નહીં મને તો તાજા તાજા મને આવે પછી સોડા કરી આપેલા નાખી છે તમે કરી દઈશું ના મારું તો તમે ઓકે કુમારને છે કપડે ધોવાના છે મને આપી દે જર્સી એમની એ જર્સી તો ધોવા નાખી છે બસ એક જ આ યસુડાનું તો ધને બધું ધોવાનું છે પછી આજે એમ જોઈશે ને ઉગાઈ જશે પછી રાત નહીં ઉકાય વાદળ ના ગયા હું મારે ઘેર જોઈશ ટામેટા આપી એક તો બે ડુંગળી ટામેટા બીજા કોઈ આ બાનું જ પેન્ટ છે કેટલા આખો બેટા ડુંગળી ડુંગળી ભારે માણસ કુમાર
આ શું તમે તમે રીતમ એ કોથળી તમારા ડાયરેક્ટ માટે લાવજો. પેલા ગેસ લાગે ના કે US માં ગયા. મને તો બહુ આપો છો. મારા ગાંઠિયા કોઈ નહીં ખાતું મમ્મી. હું જઈ લઈ આવી છું ત્યારે આવે ને પછી બગડી જાય ગાંઠિયા. પૂર્વી એક બાજુ નીચે છે ને અમારું રિસાયકલ નું મોટું પેલું એ છે. એક મિનિટ બસ અત્યારે કઢી મને ભરવા લાયક છે મુકા છે. એટલા બધા લોકોએ પેલા પેપ્સી ના ને કોક ના ખાલી કેન નાખેલા આખું બોક્સ પેલી બીન બોલો પછી મને વિચાર આવ્યો કીધું અરે બધા કોથળી ભરી લો તમને આપું તમને પૈસા મળે છે ના ના એ તો એ લોકો એ તો અમેરિકાનું હોય તો જ ઓ એવું છે કારણ કે એ લોકો સ્કેન કરે ને બારકોડ હોય બસ જો આ મમ્મી પપ્પા આવી છું તો ના અને પેલા છોકરા તો મેં આમાં એક મૂક્યું છે તો કાઢી લો ના પછી બ્રેક માટે નથી આપી લે પછી આવી છું ફરી નહીં અને અહીંયા 1500 કીધા એટલે US માં પૂછી જોઈએ શું ભાવ છે શું ગાડી પે ગયા મોડું જવાનું અમે લોકો ઉઠીને મમ્મી ત્યાં ચા પીધી ને પછી પેલો છોકરો આવે ને આજે જમવાનું કીધું છે પેલા છોલે બની ને પછી હું તો સુપર સ્ટોર જોઉં છું સાંજે બસ આજે પેલું ગાદલાનું ને બધું કરું ઘરે સુપર સ્ટોર જવું છે પછી મારે હેર કલર ને હા એડરીના જ કરે છે અત્યારે જોડે 3 વાગ્યાની અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ કાલે પછી રણજીત એમને વાળ કપાઈ દીધા એમાં 9-10 વાગી ગયા હતા પછી આપણે ઘેર જઈએ કામ આજે વખત સુપર સ્ટોર જવું છે ઘરમાં થોડું ગાદલાનું ને બધું વ્યવસ્થિત કરજો તો છોકરો થોડી વાત કરતો અને કઈ કલર હા ચોક્કસ તો આપણે 6 વાગે જવાનું તમે કેટલા વાગે આવશો કેમ 3 વાગ્યાની બધી હેરની અપોઇન્ટમેન્ટ છે એટલે તો તમે અહીં આવી જાઓ ને પછી આપણે અહીંથી જોડે જઈએ બરાબર તો પછી તમે મારા ઘેર આવી જજો પછી આપણે જોડે જઈશું ઓકે હા 17-20 પર 1 પર આવી જજો કારણ કે પેલી અડીના જોડે મારી અપોઇન્ટમેન્ટ છે એટલે ત્યાં પછી હું તૈયાર થઈ જઈશ પછી આપણે જોડે જતા રહીશું લાગી દીધું ના ના ડુંગળી તમારું છે એટલે પેલી કેવી લાગી દીધું ભાઈ હા હા એના તરફ છો ના સરસ છોકરી છે કાંચોળ નથી કાંચોળ નથી કાંચોળ ઓકે હાલો તો સાંજે મળીએ ઓકે
એ બ્લેક શર્ટ વ્હાઈટ શર્ટ ધોવડાવવાનો છે. લાઈટ નહીં લાઈટ લાઈટ તો છું ઉભા રહો. કારણ કે વ્હાઈટ શર્ટ હતો ને બહુ ઇસ્ત્રી વાળો હતો પણ ખોલીને જોયો તો બહુ મેલો હતો. ચાલશે એકદમ ચલો. હું પેલા ઘેર જાઉં ને એટલે તમને ફોન કરું. 2 લઈને આવી છું. મને એવું હતું કે વ્હાઈટ અત્યારે પપ્પાને આપીશ તો એ ધોઈ કાઢશે પણ હું ત્યાંથી લાવવાનું ભૂલી ગઈ. હું કરું તમને નક્કી કરું ત્યાં જઈ. એક ક્રીમ લાવી છું ને એક વ્હાઈટ લાવી છું. ઓકે તો એ ઘરે જઈને પહેરાઈને જોઉં કે બહુ મેલો ના લાગે તો વ્હાઈટ નહીં તો પછી ક્રીમ. ઓકે ચાલ. પછી પરોઠા લઈ આવજો બહારથી બકા. એ જ કરવાનું છે. લસણ આમે છે કીધું ને બકા રસોડું નાનું હોય એટલે આટલા બધા રોટલા થેપલા એમાં શું આટલા નાના રસોડા નથી કરતા. પૂરી પાડી દો. હા ચાય પત્તી એના શેમાં કરું ગ્રેવી કર્યું અમાકુ એમાં પપ્પા પેલી મેલ આપો ને તો હું જોઈ લઉં. પપ્પા પેલી મેલ આપો તો હું જોઈ લઉં મારે. અને ત્યાં તો ચાલે પણ અહીંયા ત્યાં ખોલ્યા વગરની છે મેં તમને મેલ નથી કરી. કાશ્મીરી મરચું નાખી કોણ છે? પ્રેમજી હોય છે. પ્રેમજી ભાઈ લે કે દીધો ઓલું કરી જો આ મરચાની બટાટા અમે તો શું કરવાનું આપણે દાળનું મારું મેં કેમ મૂકી મારા લખેલા કાગળો લઈને
Take my part, 2,300, shit. I said, he should be able to shoot after this time with me. I forgot her contact with her, but you know. પેલા ઈ ખરા ને જો બીજા લોકો ગેસ નહીં हेलो ये साइकिल पूरी जानेवारी से कराई ये साल पर नहीं करता है ये मुझे आप क्या जाते हैं जवाब આપણને કામ છેapa ya tuh di cycle dan pakai mau pion pun ini boleh itu bagi biji guru ada boleh di oke itu biji biji ના મને બતા ખબર તો નહોતી કીધું તો લસણ આદુ વટે કેટલા વાગે તમે પેલામાં મોકલ્યું પણ તમારે લખવું જોઈએ કે ઇન્ડિયન 8:30 વાગે हाँ तो ये तो साथी है કારણ કે પેલા લોકો તો તમે અહીંના ટાઈમ પ્રમાણે મોકલે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો લખો ને કરેક્શન કરીને કે ભાઈ એ રીતે આપણે સ્કૂલને ના ખાતા પેલા બેમ બધી બાબત મૂકી લો મમ્મી પોતે પેલું આવી છે બ્રશ મમ્મી જોડે સ્ટાર્ટ બ્રશ ને આ મૂકી દીકરા હું પૂરી થઈ ગઈ यशु उठे તમે એ રૂમમાં જશો તમે ત્યાં જશો હવે
મારે એક સેમિનાર ચાલુ થાય છે, તમારે સુઈ જવું છે હજુ? અચ્છા, મોબાઈલ લઈ જાઓ એટલે લઈ જાઓ. ચંપલ મેં નથી પહેર્યા, તમારે પહેરવા હોય તો પહેરજો. હા,
Hello.